Okay, so let us start. I will just share my screen. Okay, my entire screen is visible to you. Okay, so let me just start with the. Okay, let me just go to the full screen mode. So IoT programming. So what is a IoT programming? Basically, using ESP8266 and Arduino IDE, we are going to write some C codes through which your IoT device can work. So that is what I would recommend, or we would call this as IoT programming. Now, web services that are typically used with this ESP8266. Now, this is a alien word what I am talking about. So let us first understand what is this ESP8266, and then another alien word which is IFTT. So some of the requirement to understand this lecture fully is a student should be able to do some kind of C programming in his first year and some kind of basic electronics. So before we move ahead, I would just go to regular browser. You can open any browser over here. Go to let us say Google and type this alien word ESP8266. So first thing you will find is there are different modules available. Suddenly this special kind of chip will arrive, and this is nothing but a base for your entire IoT. This chip had turned the entire table towards this IoT domain, because what was happening is most of the controllers, they were not able to communicate without serial communication to the world. So what this chip has brought to us, it's something called, as you can see, it's already marked on the top of its packaging, Wi-Fi. So it's a microcontroller with a Wi-Fi. Now, what is a microcontroller, or what is a controller itself? One which can perform certain type of operations, or one which can control something. So based on the input, you have to say some output. So that is what is a microcontroller. Now you can see this is very low cost, and that is the reason this particular IC or this chip is getting popularized. You can get them as cheap as 94 rupees, so less than 100 rupees you can get a microcontroller. And a typical board that we need, which is node MCU, which is currently market price. During this silicon shortage the price has increased, but still you can see this particular board is trying to maintain its cost at rupees 183. But maybe because of the silicon shortage, people have increased the prices in their shops, so you might get it around 200 to 350 in the current scenario. So ESP stands for expressive. So there is not a clear cut three word short form, but expressive if is the company, expressive systems, and that's why the word is ESP. Now ESP01, it starts all with ESP01, which is the first of their chip, and then the board around this ESP01 is called ESP8266. Now this particular 8, they have chosen it from the 8-bit systems or the 8-bit microcontroller systems, but actually ESP chips are up to 32 bits also. So it's not limited to 8-bit operations anymore like Arduino, but you can get up to 32-bit operations on your ESPs. Now they are developing 64-bit operating IoT devices also. So the future is there. Now we do recognize that processors are going towards 128 bits. Lot of development is going on, but still currently there is no processor available that can, especially in the microcontroller domain, that can still work a complete 128 bit ALU. So most of the operations are still limited to 64, and that's why the IoT devices are also limited to 64. So the best website to buy this, you can directly go to the Google and click on the shopping tab, and you will see different websites over there. So one which I trust with is maybe a Flipkart. That is a good. Electronics Comms is a good. Uh, then
I think there is something called as Robu as well. So this is a Robu website. Robo is in Pune, Electronics Comp is in Bangalore, and Flipkart does get the boards from different locations, mostly from Bangalore or Delhi, and they deliver it to you. So these are the different what I have tried and tested purchase sources. So first thing, you will see different cost while you go to the board domain, and then it's very difficult for you to choose which one to go for, because it will have some spamming websites also, and Google take no responsibility, even though they show in their shopping the product is delivered to you. So we have to try out. If any of you have tried Sun Robotics or uh, Fine Robo or these new websites, you can let me know that these are also good websites. And then once you know, you can just take one which you trust with, and then try to choose the minimum price out of it. So this is how I do it, but you can have your own ways of purchasing the components. Many students directly go to the shop, but there the problem is, once they sell you, there is no guarantee or warranty. So as soon as you open that silver, what you call say anti-magnetic cover, your product, if it doesn't work, it's your loss. So getting the electronics components right now from the shop is not the best of best idea. But if you trust the shopkeeper, if shopkeeper trusts you, then yes, that is the best way to get that. Those who want to go for a starter kits, that is not only just the board but all the peripherals around you, they can do choose some ESP8266 based starters. Now this is the thing people don't understand. IoT, it's like learning swimming. Okay, now I can watch hundreds of videos, you can listen hundreds of lectures like this, and you think you are good with IoT. Can this thing happen to the swimming? If you watch, let's say, thousands of videos on YouTube about the swimming, backstroke, front stroke, will you able to swim? So the straightforward answer should be no. I know some of you might tell ki we are just around the swimming pool and connected to the internet, putting the phone on the chair, and when we are swimming, that's okay. So that is the thing. Same thing should happen whenever you see you are doing some IoT programming through online learning. You should have this kit around you. Okay, so that is something like you are swimming, and then you are trying to learn from it. Don't just sit back, just log in through your phone and try to learn the things. This is not the way we learn IoT. Okay, you have to do it. Only way to learn IoT is by doing it. I can give you exact detailed programming right now, but at the end of the day you will realize you still don't know anything. So if you want to learn, you have to have this hardware in your hand, and it's not very costly. I think it's cheaper than a pizza. So definitely you can spend one of your pizzas to get this board in your hand and learn to do it. Uh, I think the this lecture is getting recorded, so you can then refer back from this point onward. Once you have this board in hand, then refer back this lecture and try to learn the things. Okay. So let us go ahead. If you all in college, I'm not sure which location you are in, but if you are in college, you can go to some of the labs. I have personally provided this kind of boards in many of the products, so you can connect through them also. And there are some USB cables required, which are typically micro USB. आपके मोबाइल चार्जर की जो केबल है, यहाँ पे दो चीज़ें समझनी है कि माइक्रो यूएसबी केबल फॉर डेटा क्या होती है. सो next part, once you get this board, next is micro USB cable. Okay, now here you have to say data. Now see, data transfer cable and power cable are the different things. Unfortunately, they both look exactly the same. Okay, what is a power cable or a cable which can charge the phone? It's the similar thing where you have this USB, regular USB type A, and then you have micro USB at the other end. But internally, through this wiring or through this shield, there are only two wires going, which is for the VCC and ground. So nothing else, no internal connection. They save a lot of copper by doing that, and that's why only two wires inside. It's a power cable. None of the programming can happen with the power cable. So you might say your board is bad or you cannot program it. The main reason is this cable.
So first thing is you should have a data cable. Typically in olden days, the this kind of data cable is given with the phones. Nowadays they are, because of the cost cutting, they are not giving it and giving it the name of a green world, but they are saving the money. So whenever you go in the market, how you will check this, get a cable, how you will check this is a data cable or a power cable? The simplest way is to connect a phone, okay, through this cable to your laptop. If your laptop detects it as an extra drive where you can upload a picture into your phone, if it detects like a pen drive, then you can clearly say this is a proper data cable that I have got. You should upload a picture and then should download the picture from the device to ensure that both the TXD, that is transmit data, and RxD lines are working. So these are the only two things required to start with IoT programming: a USB cable, that is USB A to micro USB type cable. Now remember, the technology of the Chinese developers are still lacking. They have not reached Node MCU with USB-C type. Maybe after this talk, maybe within a year, you might see some Node MCUs with USB-C type programming capability. But currently, the entire world is still running on USB-B and micro USB type. So you should have these two cables in your hand. USB B type cable is generally you get with your printers, so they are available in bulk. But this kind of technology, since mobile phones have already moved to USB C, these kind of wires are getting rare. Don't use old wires because they are not capable of delivering sufficient current. So try to get high, that is high or fast charging cable basically, that is high copper diameter, and because of that you can carry the more current into the wire. So I think इनफ ऑफ इंट्रोडक्शन. आपको समझा है ESP8266 आपको खरीदना है 200 रुपए का, और ये केबल घर में होनी चाहिए. अगर नहीं है तो यू गेट इट. डेटा केबल थोड़े महंगे आते हैं देन पावर केबल. सो रफली 30 to 60 रुपीज रेंज में आपको पावर केबल मिलते हैं. डेटा केबल डू स्टार्ट विद अ रेट समथिंग लाइक 199. ओके, try to get the cable from a branded thing, especially if you can get a gold coated ones, they are good. But you can start with this 199 rupees cable also. So roughly 300 400 you spend to get the entire thing ready in your hand, and then you go to the coding part. So I have already explained you about ESP8266. Now typically web services used with ESP8266 are IFTT, which is if this then that, which is pretty odd short form, but yes, if this then that, IFTT. Okay, so we will talk about that later. But you remember that web service mostly used with ESP8266 is this IFTT. We will go into the detail of this protocol, but right now you just remember a full form of it. So that is if this then that. Requirements, and though I say you should have a knowledge of C programming and basic electronics, most of you might say we have studied it in first year, or some of you are still studying it, some of you might have forgotten it, so it's okay. I will try to keep this lecture so simple that everyone should understand. Typically my lectures are understood by 8th standard students also, so if you are better than them in your mental ability, you should able to understand this lecture, and obviously you should be listening to this lecture. So let us go ahead. ESP8266 boards are also known as Node MCU. Now, let us understand what is the exact difference between a Node MCU and ESP8266. I just go back to the internet. Now, when I search Node MCU, you will see this board. Now, also the price range has raised from 97.94 rupees to 183 345. So basically, Node MCU is like a full kit. So ESP8266 only controller if you purchase, you are not having the general purpose GPIOs taken out for you. You don't have a USB to serial converter. You don't have your USB micro USB port onto it. You don't have a large size board where there are voltage regulators or current limiters. So that's why
Node MCU is the thing that you should buy at least for the first time instead of just buying ESP8266. Now this is how the board looks like. It's still a very tiny board. It is a size of I think your thumb, not bigger than that. So it's very small board, and typically you get different types of node MCU. So I will tell you the main difference. There are two main brands in the node MCU. One is Amica and the other one is Lolin. uh, Amica is the most preferred brand because this thing fits on the breadboard, where Lolin doesn't fits on the breadboard. Secondly, Lolins are cheaper, so most of the times two students go to the market, get same node MCU, for one got it for 200 rupees, the other one got it for 300 rupees. That is the kind of a cost difference you'll get. So I would straight away recommend, don't buy Lolin. I know Lolin is gonna kill me for this, but basically it doesn't fit the breadboard. So I have wasted my money in getting Lolin first because it was cheap. Then I realized it doesn't fit a breadboard. Then some of my students got a Amica. They show me it fits. Then I started using the Amica ones. So any version, I'm not saying Lolin and Amica because these are the two company names, but any versions that fits on your breadboard, you're good to go. Otherwise, don't go for these. Secondly, the component quality. I'm sure everything is coming from China only, but unfortunately, China also has two grades of components. So you get a better component quality with Amica boards and not with the Lolin boards. So that's why the cost difference is also there. So component quality wise, you should always go for better components if you want to use it for a long time. If it is just for a 1 or 2 months till your craze about IoT goes down, you can use the Lolin boards also. So based on your requirement, get the board. So I think I have made clear what is a node MCU. Now, what is ESP8266? So it's a chip that is fitting onto your node MCU. I think in some of the pictures you can see the best thing about ESP8266 board itself. This PCB is SMD plus through hole type. So you will see that those who don't know SMD soldering, they can still attach a pins and connect this board to the node MCU. Most of these node MCU boards are having a SMD connections. That's why you don't see the two PCBs. They are exactly coupled together. But actually, this ESP8266 can be desoldered if you give a hot air gun with 400 degree. You can take this other board out, and let us see how the separate only ASP8266 looks like. I wrote some random words. So this is the removable version of Node MCU where ESP8266 is attached as a separate attachment on top. So you can see this is a ESP8266 board going through the buck connectors to the programming board. So this is what it looks like, a Arduino and its shield, and they are totally separate parts. So this is what you get as a node MCU, a single unit. The other unit will have a power supply, this USB. Then you have this USB to serial converter, and then you get some reset buttons and programming buttons. So this is another difference with these boards. Most of them don't realize that while uploading the code they have to press one of these buttons, IO buttons, other than your code doesn't get uploaded to the node MCU. And you also have a onboard blink LED, which is blue in color. uh, so there are two versions of node MCU. ESP8266 is the cheaper one. Then comes a latest node MCU board which is called ESP 32. So what is the difference between the two? Is ESP30 board two boards obviously they are costly. Secondly, they do have Bluetooth plus Wi-Fi facility. So integrated dual mode. Even they have Bluetooth with BLE capability, that is low power Bluetooth,
and that's why ESP32 is the next gen node MCUs which one should have. There are two variants of it. One is 30 pin, the other one is 38 pins. Obviously, the cost wise, 38 pins are higher, and ESP32 programming wise exactly the same. I will tell you where to change few of the commands to get the same code running on ESP32 which I have wrote for ESP8266. The reverse is not possible. The Because of the advanced features, the codes written for ESP32 are not back compatible with ESP8266. Not, at least not all of them. There are few which we can, but not all of them. So remember this thing: all the coding that you do on ESP8266 can run on ESP32. The reverse is not possible. So let us go ahead. I think I have made it clear at least. अभी ESP8266 इतनी बार सुन लिया मेरे मुंह से कि अब उसके लिए डर शायद कम हो गया होगा. सो देखते हैं कि ये दिखता कैसे है. नोड एमसीयू टिपिकल कॉस्ट आई हैव रिटर्न, और ये लेक्चर आज जब डिलीवर हो रहा है उस वक्त की ये टिपिकल कॉस्ट है. तो ऑब्वियसली इफ यू आर लिसनिंग आफ्टर 10 years दिस मे नॉट बी द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ दिस बोर्ड. अभी आप सोच सकते हो कि कॉस्ट कम होगा या बढ़ेगा. टिपिकली कॉस्ट का ऐसे रहता है कि इनिशियली नोड एमसीयू 1000 के आते थे, और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद इट गोज डाउन because of the mass production and well awareness going amongst the people. The cost will go down, but eventually it will reach its least point and then it will saturate over there. So cost, फिर बाद में नया बोर्ड आएगा तो ये ऑब्सोल्यूट होने की वजह से कॉस्ट वापस बढ़ते जाएगी. सो यही चलता है जनरली. हर बोर्ड की लाइफ 5 साल रहती है. Arduino was exception. It remained in the market for at least 10 years. Now again Node MCU will take over it, and it's the Arduino with Wi-Fi. So obviously the software still remains Arduino. Why this Arduino is so popular? Because firstly it's a open source. So all the board design, everything is open source. You can make your own designs. You can start your own startup using these boards, and nobody is gonna claim that you have used our designs. So open source community, just to uh, give the engineers a chance to build these things. With the arrival of ESP8266, obviously electronics engineers in India are not able to do the desoldering and resoldering on the SMD level components. They do know some of the soldering and desoldering techniques on through hole components, but they are not very good at doing a chip fabrication on the, what you can say, SMD type electronic boards, and that's where we are lacking. And most of the people, that is computer engineers, can use these boards, but electronics engineers don't know how to do programming, and that is a problem with the India, that most of the engineering students are moving towards computer engineering and such related branches. The reason is this only: electronics engineers are not good enough to repair the boats or to reconstruct or regenerate the boats, where China is, I think most of the Chinese students are getting the training. Chinese engineering institutes are making them do hundreds of boat development during their engineering. So they are so confident they can easily develop a new boat, and even their 10th standard students during their schooling knows how to solder and desolder the things. So that's the problem with India, and we Indians are not caring about it. That's a very serious problem. uh, I think I am delivering this lecture to the electronic students, so you are the one of the luckiest ones. When you pass out, there will be a shortage of electronics engineers, but you get the skills, and if your skills are right, you will be getting highly paid. So let us understand few more alien terminologies in IoT programming. First is station. So most of the times I was confused between what is a station. Can I call a Wi-Fi router in my house as a station? And what is a access point? So let me get this thing very clear to you. A station, it's something which is the node, or what you can say, data is coming from, and your Wi-Fi router which is connecting internet to these stations is called access point. Okay, so don't get confused between these two words.
Your computer can be a station which is sending a data or communicating with your access point. Even your ESP8266 can be a station which is sending data to your access point. And Node MCU is the version uh, of ESP8266 which you should use. So I think एक्सेस पॉइंट डेफिनेशन इज क्लियर. घर का जो राउटर है उसको हम एक्सेस पॉइंट कहेंगे. स्टेशन डेफिनेशन, वी विल सी स्टेशन और एक्सेस पॉइंट खुद नोड एमसीयू बन सकता है. तो आई विल नॉट से नोड एमसीयू इज ऑलवेज अ स्टेशन, बट यस, station is something that senses the information and sends it. So whenever you are defining the programs, which program to choose, don't get confused. Access point generally for the Wi-Fi routers and stations generally for the node MCU. But there are some scenarios which we'll talk about where your ESP8266 itself become access point, and especially when you don't need a Wi-Fi for getting the internet, but you just need a Wi-Fi to communicate within a room or within few devices in your campus, then your node MCU itself should be a access point, and that's where you can connect your phone to your node MCU directly without Wi-Fi and get the data out of it. Okay, so only two things to remember: access point is something where we generate a Wi-Fi SSID and password, and station is something that connects to the Wi-Fi SSID and password. Now this is a scenario where we call it as a soft access point because it's a software defined access point, where your node MCU or ESP8266 becomes a Wi-Fi transmitter. Okay, so here it emits SSID and password. I think something has happened to my PPT. Let me just go back. Okay, I think the screen is still visible to you all. So your ESP8266 is transmitting the data. Basically SSID password is generated into your ESP8266, and now your phone or your PC is connected to this particular board, and then Wi-Fi transmitter. There is no need for a router in the room. Yeah. Okay. Thank you. Let me just go back. Okay. Host has disabled screen sharing. Uh, I think I would request host to give me the access to share the screen. Okay. Thank you. Uh, okay. So is my screen visible to you all again? Okay. Thank you. तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने ESP8266 बीच में रखा है, and I have named it as soft access point, and my mobile phone is now getting connected to this soft access point. Even my laptop can get connected to this soft access point. So there are two modes: one where your ESP8266 is a station, the other one is where your ESP8266 is a access point. Now there is no need for Wi-Fi router in this case. So most of the products that I have developed during this workshop were using this soft access point, and that's why you can connect to your smart shoes and get the data from your smart shoes to your mobile phone. There are many products which need Wi-Fi access, so Wi-Fi SSID and password. But I thought since you are in your college environment, there will be a lot of restrictions on Wi-Fi usage, and their connectivity will be through username password, and that's why soft API was the preferred choice. And even whenever you are developing a IoT product, soft API or the ESP8266 becoming access point should be the preferred choice of the programming. Now, you will say that this was a IoT programming lecture and why sir is talking so much theory behind this, because later on while doing a programming, you will have to understand these basic concepts. So that's why I'm covering it in the introductory part of this lecture. So let us go ahead and see a website which is the what you can say, something which brought this IoT to the life is called ThinkSpeak.
So this is the first website which gives this IoT services free of cost. So it's a free website. The data will be get collected. Most of the students at that time didn't knew anything about HTML programming, so they were not able to develop their own web pages and all. So ThinkSpeak gave them a chance to get a ready-made HTML pages where the things can get visualized, and IoT can directly send the data over the ThinkSpeak if they know their channel ID. So ThinkSpeak is a website. If you don't know anything about HTML or Java coding or front end CSS, directly go for ThinkSpeak. Now again, ThinkSpeak gives you, I think, 10,000 readings free of cost, which is sufficient enough for a project in its prototyping phase. And even if you want to go for a product phase and you want to go for अपनी खुद की स्टार्टअप चालू करनी है, तो आप थिंक स्पीक का पेड वर्जन भी ले सकते हो. There are other websites which you can use, but yeah. So uh, let us see what this ThinkSpeak does to us. So ThinkSpeak is something like this. You can see field one chart और वहाँ पे कुछ points plot करके दे रहा है. ये data आ रहा है आपको actual node MCU से. So node MCU can read and write. Typically we generally write only on the ThinkSpeak. We never read back from the ThinkSpeak to your node MCU. So you can say Node MCU can write directly onto the internet, and these values can be directly seen through using a ThinkSpeak. You do need a Wi-Fi router or a internet connectivity to send this data to the ThinkSpeak. So in that case, soft API may not work until unless your soft API is connecting to the phone. Uh, okay. Yeah, no issues. Okay. So basically, you can send this data to the ThinkSpeak channel using a internet connectivity. तो सॉफ्ट एपी मोड में इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे मिलेगी? आपको मोबाइल फोन का डेटा नेटवर्क चालू रखना होगा, and you have to send the soft API data to the mobile phone, and then mobile phone will upload it to the ThinkSpeak. Otherwise, you have to have a Wi-Fi router which is your AP, and ये जो नोड एमसीयू है, ये आपका स्टेशन रहेगा जो वैल्यू रीड करके इस एक्सेस पॉइंट के थ्रू सीधा थिंगस्पीक पे डेटा अपलोड करेगा. देर आर सम न्यू टेक्नोलॉजीज. आपने देखा ही है कि ट्विटर जो है, इट्स प्रमोटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड थिंग ट्वीट, which is similar to a ThinkSpeak, but your IoT device now can tweet. Okay, so ये जो इलॉन मस्क ने बोला था कि बहुत सारे रोबोट्स है जो ये ट्वीट करते रहते हैं, तो ये ट्वीट कहाँ से आते हैं? थ्रू दिस थिंक ट्वीट. Node MCU is tweeting these tweets. You don't need Node MCU to tweet. You can write a program in your computer to generate a fake account and tweet on your behalf. But generally, think tweet, it's something that looks real. It takes a real time data and then put the tweets कि आज बारिश ज़्यादा है and पकोड़े खाने का मन हो रहा है. Everything you can do it with your Node MCU. So it takes the actual data and plans the tweet according to the actual data. So it allows us to tweet automatically. Let us just go back for a second to the internet browser. Uh, yeah, and I would like you to show what this I think speak looks like. So this is a website, thingspeak.com, and here you can get started for free. So definitely you can buy their commercial licenses, but these are some of the examples that they are saying. ThinkSpeak for students and educators, this is the category you should choose. Then there are ThinkSpeak for environmental monitoring, where the channels are typically pre-fed. Then ThinkSpeak for energy monitoring, and ThinkSpeak for smart farming. So these are the three main areas in which the IoT is also growing. So you can see a separate sections has been made on ThinkSpeak. ज़्यादातर काम environmental monitoring पे IoT stations के थ्रू हो रहा है. The solar panel और next green energy, वहाँ पे IoT based devices import हो रहे हैं. आप जानते हो बहुत सारे आजकल आपके घर के मीटर्स भी IoT बेस्ड है, तो आपका फोटो खींचने वाला बंदा
आपके घर के मीटर की रीडिंग का, मतलब एटलीस्ट इन place where I live, they don't come, they directly take the data from the IoT. So all these new energy meters are IoT based, and they directly collect the data कि आपने कितना यूज किया है. Then things speak for smart farming is the next big thing कि यहाँ पे एग्रीकल्चर डोमेन में जब इंटरनेट जाएगा तो सॉइल मॉनिटर करना या फिर प्लांट ग्रोथ देखना, डिसीज स्प्रेड को चेक करना, ये सब इंटरनेट के थ्रू होगा. क्योंकि जनरली दिस फार्म लैंड्स आर इन acres and it's not possible for a human to manually inspect these entire farms, but it is possible to have a IoT spread around in acres and not at a very large cost. These IoT devices can run from the solar energy without any problem. So definitely solar based IoT device which are portable, deployable should be the next big thing, and you learn to make these kind of products which are solar powered. So let us go ahead. I think I will just show you how this thing tweet looks like. So generally you get this thing speaks thing tweet directly on the same website, uh, and it is compatible with a software called MATLAB. Uh, so if you have MATLAB license for students, most of you should get it. It's free of cost. I think per day or per month you get 20 hours of programming free on MathWorks. So definitely create a account on MATLAB and then write a code on MATLAB, upload it to your smartly connected devices, and then tweets can get generated. So here is one diagram shown to you. All these node MCUs are sending data to your access point. MATLAB is connected via a computer to this same access point, and it is reading out the tweets previously aggregated and then generating the new tweet data, which is getting transmitted to the uh, thing speak or thing tweet, what you can say. Okay. Now, obviously, these tweets are for somebody's beneficial, maybe commercial, academic, student. So these are not free of cost. People have to buy a subscription, and you can also check how to buy on this particular website. So these are the four modes in which you get these options, and definitely as a student they will give you a lot of concession. So you can see what you can do with the free account, what you get with the student account, and based on that you can use this particular think with technology. So let us now come to the talkback feature. Now typically talkback is used to control the node MCU through the tweets. So what happens is I can directly talk to my node MCU device. Node MCU will say टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, मैं यहाँ से मैसेज कर दूंगा तो एसी चालू कर दे, and it will start the AC in your house. So this is the kind of talkback feature. Obviously कंट्रोलर है वो खुद से एसी चालू कर सकता है. तो बहुत बार ये ट्वीट ऐसे हो सकता है कि एसी चालू कर दिया है मैंने, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया था, फिर टॉकबैक में मैं बोलूंगा अरे बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, एसी बंद कर दे, मैं अभी घर पे वापस नहीं आने वाला. सो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग वेर यू विल स्टार्ट टॉकिंग टू अ रोबोट, and then based on your decisions robot can take his or own fuzzy set of decision जो आप ही ने उसको बता के रखे कि मैं ऐसा बोलूंगा तो ये करना है. And it can also use this tweet features to take the input from the other node MCU. So you can imagine घर का आपके घर का node MCU आपके पड़ोसी घर के node MCU से बात कर रहा है ट्विटर पे कि भाई टेम्परेचर मेरे यहाँ का बढ़ गया है, बाजू वाला बोल रहा है यहाँ तो बहुत ठंड है, लगता है मालिक ने एसी चला के रखा है. So these are the things that you can do with your node MCU, and it's fun to imagine right now, but that is a practical thing what is happening around the world. Your Alexa devices are communicating with each other. वो अपनी भी बातें सुनते हैं और पड़ोसी की भी बातें सुनते हैं. So Alexa is another IoT device which is getting popularized, and there are some smart CCTVs which are recording the things. Especially they are sending this data to their home company. अपने को लगता है कि CCTV recordings are within ourselves, but these IoT CCTVs
They are dangerous because they are pre-programmed to do the data analysis and send vital information to their host companies, and then these host companies can use this data for advertisement purpose. So that's why you can say that the safest CCTV to install in your house is a offline CCTV, which doesn't have any internet connectivity. So let us go to a further step level where your Google Assistant in your phone can be control a node MCU through IFTT. So this is where you say turn light off. Okay, Google, turn light off at my home, and then your Google Assistant recognizes this, sends a signal to your node MCU, और आपके घर का लाइट यहाँ से बंद हो जाता है. um, ऐसे ही हुआ था एक बार, मेरे बीवी ने घर से बाहर निकाल दिया था मुझे, और फिर मैंने घर के लाइट बंद कर दिया, पंखा बंद कर दिया, तो उसने मुझे वापस अंदर ले लिया. So having a node MCU in your house does help you, and you should be an engineer to survive in this kind of situations. And you use a technology IFTT to do this. So again, हम अभी तक IFTT के बारे में क्या जानते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है? वो फुल फॉर्म इफ दिस देन दैट. नेक्स्ट इज थिंग HTTP. बहुत सारे लोग HTTP प्रोग्रामिंग जानते हैं. So thing HTTP क्या करता है आपको? It is used to send a web request. So you can ask for a data using thing HTTP. By you can send alerts to your uh, home members through a IoT. So let us assume कि आपने एक घर पे इंस्टॉल किया है IoT बेस्ड डिवाइस जो घर का टेम्परेचर मॉनिटर कर रहा है. घर में अचानक से आग लग गई है, तो सबको मैसेज चला जाएगा आपके घर के मेंबर्स को कि घर में आग लगी है. And it can also send a alert to the your fire department also. So thing HTTP, it's something like thing tweet, but not only limited to the Twitter, but it can send this to any website across the web. Even you can send a email, you can send a SMS through this thing HTTP. So that is a next level of programming that simplifies the communication of web services or application interfaces, so called APIs, and then you can communicate or browse those APIs onto your IoT devices. So IoT फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स. यहाँ पे फिजिकल डिवाइसेस और PDs हम जिनको बोलेंगे, they get connected via other physical devices. And typical examples of these PDs are smart fridge, smart laptop. Laptop is already smarter than you. And then you can, I think I should move this screen part. I don't know how to move this, but okay. I think I have written something which is not visible. You can think क्या होगा ये. uh, so there are many devices you can think of, जो भी जिसको भी आप स्मार्ट बनाना चाहते हो. मेरे पास स्मार्ट हेलमेट भी है जो मुझसे बात करता है, मुझे गाने सुनाता है व्हेन आई एम राइडिंग अ बाइक. कुछ नहीं किया है, उसके अंदर एक IoT डिवाइस डाल दिया है जो इसको ओके गूगल बोल के मैं जो भी गाना प्ले करने बोलता हूँ वो बोल देता लगा देता है. वो ब्लूटूथ के साथ मेरे फ़ोन से कनेक्टेड है, तो वो इंटरनेट से डेटा लेता है, एंड देन इट प्रोवाइड्स मी ऑल द सॉन्ग्स दैट आई नीड while riding. Then any device you think today, even you can have a smart table, even you can have a smart टी मग. हाँ, चाय कितना है, कितना गर्म है, खत्म होने आया कि नहीं, ये सारी इंफॉर्मेशन. So anything you can make smart and put a IoT to it. So it's now up to you आपको क्या बनाना है प्रोडक्ट. I have seen smart USB cables, I have seen smart microphones. So any word you can make it smart by putting a IoT to it. एंड नाउ यू कैन इमेजिन कि इस चीज़ का स्कोप कितना ज़्यादा है. मैंने आपको जो प्रोडक्ट डेवलप किया उसमें एक स्मार्ट शूज़ है. ओके, स्मार्ट वॉच तो था ही, स्मार्ट शूज़ बन गया, स्मार्ट पैंट्स हो सकते हैं, स्मार्ट शर्ट हो सकता है, कोई भी चीज़ उसको आप स्मार्ट बना सकते हो. कैसे? बाय पुटिंग अ IoT. IoT कनेक्ट करने से क्या हो जाता है, उसको इंटरनेट की पावर मिल जाती है. देन यू जस्ट हैव टू राइट योर लॉजिक to make that thing work in a smarter way. Okay, I
Now, what are these physical devices, physical inputs? बेसिकली सेंसर्स होते हैं. तो ये वर्क ऐसे करता है कि फिजिकल क्वांटिटी जैसे लाइट हो गया, तो एलडीआर सेंसर है उसका, लाइट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करता है. दिस रेजिस्टेंस वेरिएशन इज देन फेड टू अ एडीसी. टिपिकली एक एडीसी हर नोड एमसीयू के साथ आपको मिलता है, तो आप एक चैनल तो आराम से सेंस कर सकते हो. और यही मेन डिसएडवांटेज है आर्डिनो. आर्डिनो आपको 6 चैनल देता था, तो आप 6 सेंसर्स एक आर्डिनो पे लगा सकते थे. और अगर आप उस तरह का कुछ एप्लीकेशन करना चाहते हो तो आई विल नॉट प्रेफर नोड एमसीयू, आई विल से यूज आर्डिनो. फिर आर्डिनो और ESP 8266 कैसे बात करेंगे? लेट अस गो बैक टू द गूगल. आई वुड जस्ट लाइक टू से google.com. I don't know. Google is also smart. Now here I can say Arduino ESP8266. ओके, तो अगर आप लोगों में से कुछ लोगों को पहले से आर्डिनो यूज करना आता है तो इट्स वेरी इजी. सिर्फ 4 वायर आपको कनेक्ट करने हैं. लेट मी जस्ट पुट दिस थिंग असाइड. आपको बस 4 वायर कनेक्ट करने हैं इस तरह से, और आपके ESP8266 मॉड्यूल के साथ. ये मॉड्यूल सेपरेटली मिलता है. इट्स नॉट नोड एमसीयू, इट्स द बेयर बोन और द मेन मॉड्यूल. तो बेसिकली आपको ये दो डिवाइसेस लगेंगे और इसमें से सिर्फ 4 वायर आपके आर्डिनो के साथ कनेक्ट होते हैं. आउट ऑफ दीज 4 वायर्स इसके कनेक्शन देखो. और एक चीज ध्यान में रखना कि ESP या नोड एमसीयू ये सारे चलते हैं 3.3 वोल्ट्स पे, जबकि आर्डिनो चलता है 5 वोल्ट पे. तो आपको एक रेजिस्टर डिवाइडर बायस बनाना होगा, जिससे आप जो लॉजिकल सिग्नल है वो फिर भी 3.3 वोल्ट के भेज सकते हो. तो हियर यू कैन सी हाउ दिस वोल्टेज डिवाइडर इज बीन प्लेस्ड. अगर आपके पास वोल्टेज कन्वर्टर है या फिर आर्डिनो नैनो है तो वो ऑलरेडी 3.3 वोल्ट के सिग्नल को एक्सेप्ट कर लेता है. सिर्फ आर्डिनो उनो एक बोर्ड है जिसके साथ कम्युनिकेट करते हो. यू शुड पुट लॉजिक वोल्टेज डिवाइडर टू अवॉइड एनी डैमेज टू योर ESP8266. क्योंकि अब बात को समझो कि ये 5 वोल्ट है, तो इसको अगर 3.3 मिला तो ये खुद से समझ जाता है कि दिस इज लॉजिक हाई. पर ESP8266 को हर बार जब मैं 5 वोल्ट देता हूँ तो उसको समझता है कि ये लॉजिक 1 है, क्योंकि उसका लॉजिक 1 सेट है 3.3 वोल्ट पे. पर वो डिवाइस को डैमेज कर देता है. सो आई विल जस्ट ओपन अ पेंट. आपको क्या करना है, आपका 5 वोल्ट का सिग्नल जो आता है उसको एक वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू R1 और R2 के थ्रू स्टेप डाउन करना है टू 3.3 वोल्ट. तो जब आर्डिनो भेजेगा लॉजिक 1 तो 5 वोल्ट भेजेगा. आपकी ESP8266 को पहुंचाने है मुझे 3.3 वोल्ट. और अगर आपको याद है वोल्टेज डिवीजन लॉ, तो दिस इज R1 डिवाइडेड बाय R1 plus R2, which is into V in, which is 5 volt, should be equal to 3.3 volt. Now you can choose the values of R1 and R2 in some kilo ohms and you can easily achieve it. रेशियो कितना होना चाहिए? 2:3. सो बेसिकली ये 2 के ले सकते हो, ये 1 के ले सकते हो और आपका काम हो गया. बहुत ही सिंपल है वोल्टेज कन्वर्टर बनाना. 2 रेजिस्टर सीरीज में लगा के आप कर सकते हो. This is just to protect your node MCU from any damage. So now let us go back to the presentation. Physical quantities goes through the sensors, through the ADC MUSI, which is already inside your microcontroller. Through the Wi-Fi, this data is transmitted to the internet. इस तरह से इनपुट सेंस किए जाते हैं. फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, लाइट हो सकती है, एयर प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, मॉइस्चर हो सकता है. जो भी आप फिजिकल क्वांटिटी बोलते हो, आई कैन टेल यू कि इसका वो सेंसर है, एंड देन यू कैन यूज योर नोड एमसीयू टू सेंस दैट क्वांटिटी. आउटपुट कैसे काम करता है? क्लाउड से कुछ सिग्नल आता है, वाईफाई के थ्रू म्यूजिक हो जाता है. म्यूजिक खुद कुछ नहीं कर सकता, तो वो एक रिले को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करता है. वहां से एक्चुअल एक्चुएटर जो है, जो कि जनरली मोटर्स होते हैं या फिर आपका एलसीडी स्क्रीन हो सकता है, एलईडी हो सकता है. तो बेसिकली ये एक्चुएटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इनपुट को फिजिकल वर्ड क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है.
तो यू कैन इमेजिन आपका स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से एक्चुअल साउंड वेव्स बनाता है, तो वो एक तरह का एक्चुएटर हो गया। आपका एलईडी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से एक्चुअल लाइट बनाता है, तो वो एक तरह का एक्चुएटर हो गया। मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इनपुट के हिसाब से गोल घूमता है। गोल घूमते वक्त उसको अगर आप फैन लगा दोगे तो वो एयर स्पीड जनरेट करता है या फिर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है, या फिर आप उसको लीनियर एक्चुएटर लगाते हो तो वो लीनियरली मूव करता है, आगे पीछे होता है, तो वो एक तरह का एक्चुएटर हो गया। So actuator is something that converts electrical signal into the actual quantity, physical quantity. That's why the name actuator. और इसका opposite counterpart है sensor, which converts a physical signal into a electrical signal. So I have written end of a lecture one क्योंकि generally ये इतना content एक घंटे में मेरा cover होता है. So you don't think this is the end of this particular lecture, because I think it's a 3 hour session. So we will continue with the next presentation of lecture 2. And here I would like you to think कि what are different operations. ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक एग्जांपल बेस्ड ऑन अ वॉशिंग मशीन। ठीक है, ये एक वॉशिंग मशीन है जिसको अपने को स्मार्ट बनाना है। तो स्मार्ट वॉशिंग मशीन के फीचर्स क्या होते हैं, आई थिंक अभी तक तो स्मार्ट वॉशिंग मशीन मैंने तो देखे नहीं है, आई एलजी और सैमसंग ने कुछ ना कुछ बनाए होंगे, पर ये थोड़ा एडवांस लेवल का स्मार्ट लेवल वॉशिंग मशीन है। ये क्या करता है, सुपरमार्केट से खुद के लिए खुद ही पाउडर मंगा लेता है कि भाई मेरी पाउडर खत्म हो गई है, या फिर आप अगर लिक्विड डालते हो, दोनों तरह के सोप डाल सकते हैं वॉशिंग मशीन में। वहाँ पे दो कंटेनर रहते हैं, एक में पाउडर डालनी होती है, दूसरे में लिक्विड डालना होता है। तो ये खुद के लिए लिक्विड सोप भी मंगा सकता है या फिर पाउडर सोप भी मंगा सकता है। नेक्स्ट इज, अगर उसको लग रहा है कि वो ठीक से घूम नहीं रहा है या ज़्यादा आवाज कर रहा है, तो सीधा उसको फिक्स करने के लिए खुद के लिए ही मैकेनिक को बुला सकता है। सो ये इस तरह के काम जो है, ये एक स्मार्ट वॉशिंग मशीन कर सकता है। इसके अलावा वो क्या कर सकता है, बेस्ड ऑन इट्स सेंसर, इट कैन टॉक टू इट्स ओनर। तो ओनर को बता सकता है कि कपड़े धुल गए हैं, या कपड़े धुलते वक्त पानी चला गया, या फिर कपड़े बहुत ज्यादा डाल दिए आपने, कम करो करके। सो एवरीथिंग व्हाट आई एम टॉकिंग हियर may look futuristic, but please understand this is reality. हाँ, ये ज़्यादा दूर नहीं है। By the time you are an engineer, you will see these things happening, and there is lot of requirement in IoT industry. Obviously, IoT industry एक physical hardware बनाने वाली industry है, तो the pay scales may not be high at this moment, but obviously there is a requirement. So you don't think that there is no core jobs available. The fact is there are not many highly paid core jobs available, so that's the problem. So payment will not be very high in this as a IoT engineer. When you join an industry, you have to make this product successful and get yourself on a higher position of that company to get a good pay package. So that is something students do avoid. They want their owners or CEOs to work hard and make them pay well. That is not how you should always think of. So I think I have made it very clear how to make a smart washing machine. Now I would like to go back to the chat window and I want you guys to think about one product, okay, in your house, क्योंकि मैं बोल बोल के थक भी गया हूँ, एक घंटे से कंटिन्यूस बड़बड़ किए जा रहा हूँ। So I will take 2 minute break. I will go back to the chat window of this Zoom meeting. I think I can go back to the chat window. And I want you to tell me in the chat what different smart washing machine जैसे devices you can think of, not build, but at least आपके ब्रेन को कुछ काम दे दूं मैं, और देखूं तो कितने लोग सुन रहे हैं. So you can start putting. I think host has allowed you to comment. If not, you can put direct message to me. I think I have already put two messages. Can someone unmute भी वाला वो NM जो है वो मैं ही हूँ. So you can just, if you are there around listening to me,
I want you to think of a machine, a smart product. स्मार्ट हेलमेट का एग्जांपल मैंने दिया, स्मार्ट वॉशिंग मशीन मैंने बताया. यू कैन थिंक. ओके. Okay, somebody has told about smart cleaner. I think a vacuum cleaner, I guess what he is trying to say. या फिर मैंने एक बार ई बाई बनाई थी जो झाड़ू मारती थी घर पर. स्मार्ट डोर. अच्छा, आई थिंक इस डोर को पता होगा कि आप ओनर हो. स्मार्ट बाथरूम. आई थिंक स्मार्ट बाथरूम कैन नॉट बी अ डिवाइस. आई एम नॉट श्योर अबाउट व्हाट इज ट्राइंग टू से रोहित. बाथरूम के अंदर की कुछ चीजें स्मार्ट हो सकती है, और फिर बहुत सारी चीजें जब स्मार्ट कर दोगे फिर वो स्मार्ट बाथरूम कहला सकता है. या. ओके. एनी मोर इनपुट्स? I think you have people who can think. And okay, smart water tank. Yes, I think you're talking about water tank on the top of your the roof. I think बड़ा वाला जो होता है, पानी खुद से भर सकता है. ओवरहेड एंड या बोथ करेक्ट. इवन आपके घर के फिल्टर को भी आप स्मार्ट बना सकते हो. स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स. यस. स्मार्ट चार्जर. यस. जो मोबाइल चार्ज होने के बाद आपको बता दे चार्जिंग हो गई है. स्मार्ट फैन. यस. स्मार्ट लाइट ऑलरेडी देयर. स्मार्ट लाइट आई थिंक 600-700 रुपए में मिलने भी लग गए हैं. स्मार्ट फैन भी मैंने देखा है, एक्चुअली मेरे घर पे ही लगा हुआ है ऊपर, ये जो आपको दिख रहा है ब्लरी वर्जन, तो वो स्मार्ट है. आई कैन जस्ट टेल हिम टू स्टार्ट, बट अभी यहाँ बहुत ठंड है. देन वी हैव स्मार्ट बाइक. ओके, दैट्स गुड. स्मार्ट बाइक मतलब ये पूरी सिस्टम स्मार्ट करना है. देन स्मार्ट डोर अगेन. अच्छा, स्मार्ट डोर बहुत पॉपुलर हो गया है. स्मार्ट जूसर. वेरी गुड. पर ये खुद के लिए फ्रूट्स ऑर्डर कर सकता है यहाँ पे, और खुद ही जूस निकाल के दे सकता है मालिक को. आपने देखा होगा एक रोटी मशीन आता है, जो सिर्फ आटा लेता है और फिर गर्मा गर्म रोटियां डिलीवर करता है, विच इज़ अ बिग हिट इन यूएसए. जो भी अपने इंडियंस वहाँ जाके सेटल हो गए, रोटी बनानी तो किसी को आती नहीं है. सो देर इज अ सिंगापुर कंपनी जो इंडियन लोगों को रोटी बनाना सिखा रही है थ्रू द रोबोटिक्स. स्मार्ट आयन. ओके, ये खुद से आयन कर सकता है शायद. देन स्मार्ट रोबोट वैक्यूम. यस. स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर इज ऑल्सो अ पॉपुलर डिवाइस. देखो, यहाँ इंडिया में फ्लोर सीधे नहीं रहते, तो वैक्यूम क्लीनर स्मार्ट तो हो सकते हैं, लेकिन आई वुड प्रेफर स्मार्ट झाड़ू. इंडियन कंडीशंस के लिए ज़्यादा बेटर है. स्मार्ट कार्स. Okay, smart cars or electric vehicles. Okay, they are people are calling it automatic cars and electric vehicles. Okay, ये बहुत बड़ा मतलब IoT है इसमें, पर ऑटोमेटिक व्हीकल्स ये बहुत ही बड़ा सिस्टम है स्मार्ट बनने के लिए. ओके. सो आई. ओके, स्मार्ट होम सिक्योरिटी. स्मार्ट डोर की तरह ही होगा. स्मार्ट मिरर, जो आप मोटे हो गए वो बताएगा या फिर कम खाओ बताएगा. बहुत बढ़िया. सो यस, पीपल आर डू थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स. स्मार्ट पेन फॉर राइटिंग, ये खुद से लिखेगा या शायद बहुत लिख रहे हो बताएगा तुमको. आजकल कौन ही लिखता है, दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम. ओके. आई थिंक कमेंट आना बंद हो गया है या कुछ. नो इश्यूज. लेट अस गो बैक टू आवर लेक्चर ऑन प्रोग्रामिंग. थैंक यू फॉर योर इनपुट्स, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, and you all should try and build these systems. I will definitely help you. uh, yeah, smart air purifier. पहले
plain air purifier. Okay, so let us go back to the smart vacuum cleaner. I will read out the other comments later on. So I think my screen is visible to you all. Okay, thank you. Now there are two words which I already talked about. Those are Amica and Lowlin version. अभी हम जानते हैं कि सस्ता चाहिए तो हम लोलिन लेंगे, पर ब्रेडबोर्ड पे काम नहीं कर पाएंगे, थोड़ा महंगे में जाएंगे तो एमिका का वर्जन लेंगे। नोड एमसीयू प्रोटोटाइप बोर्ड में पावर पिंस इस तरह से दिए हैं, क्योंकि ये बोर्ड खुद 3.3 वोल्ट पे चलता है। तो यू कैन सी देयर आर 3 पेयर्स ऑफ 3.3 वोल्ट। व्हेन आई से पेयर, तो उसमें क्या होता है, एक 3.3 वोल्ट की सिग्नल की पिन होती है जो यहाँ ऊपर है, और फिर नीचे एक ग्राउंड की पिन होती है। ओके, सो इस तरह से 3.3 वोल्ट के 3 पेयर दिए हैं, 3 डिफरेंट आयोज रन करने के लिए। और फिर पावर पिन दिए है 5 वोल्ट के, जो है वी इन और ग्राउंड। यहाँ पे 5 से 6 वोल्ट भी दे सकते हो, इनपुट है क्योंकि वो। तो रिमेंबर, नोड एमसीयू 5 वोल्ट के बोर्ड्स को डायरेक्ट ड्राइव नहीं कर सकता, करेगा तो करंट ज्यादा लेगा, थोड़ी देर बाद खराब हो जाएगा। सो इफ यू वांट टू ड्राइव एनी 5 वोल्ट ड्राइवर, प्लीज गेट इट्स ओन सप्लाई टू मेक दैट सिस्टम। द अदर पिन्स ऑन द बोर्ड, अभी ये प्रोग्रामिंग में बहुत जरूरी है। डिजिटल आयोज कितने हैं, तो याद रखना 9 डायरेक्ट डिजिटल आयोज आपको अवेलेबल है। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट नोड एमसीयू बेस्ड ऑन ESP8266, सो डोंट थिंक कि सिर्फ इतने ही आयोज होते हैं। और ये स्पेसिफिक केस है एमिका का बोर्ड के लिए, और उससे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस भी आते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर बोर्ड में आपके पास 9 डायरेक्ट डिजिटल आयोस है। सो डिजिटल पिन क्या करते हैं, आयो नाम में ही है, इनपुट एंड आउटपुट ले सकते हैं। तो अगर आपको एलईडी जलाना है इन पिन से, तो आप 9 एलईडी जला सकते हो। आपको अगर बटन कनेक्ट करना है तो आप उस पर 9 बटन कनेक्ट कर सकते हो। डिजिटल आयो नाम दिया है, इसका मतलब वो और कुछ नहीं सुनता। ठीक है, बहुत बार जिंदगी में भी डिजिटल बनने की जरूरत होती है। शायद मैं कल आऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता, एक तो मैं आऊंगा या मैं नहीं आऊंगा, करेक्ट। सो उसको हम बाइनरी डिसीजंस बोलते हैं। तो ये लेना सीखना स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी होता है। मैं ये लेक्चर सुनूंगा या नहीं सुनूंगा, क्लियर। शायद मैं सुनूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता कि आप हाफ हार्टेडली कुछ भी मत करो। आप छोड़ दो इस लेक्चर को, आप मूवी देखो, पर हाफ हार्टेडली लेक्चर मत सुनना। तो शायद जितनी जल्दी आप जिंदगी में से हटा दोगे और डिजिटल बन जाओगे, उतनी आपकी जिंदगी भी सिंपल हो जाएगी, क्योंकि आपके पास सिर्फ होगा बाइनरी डिसीजन, आइदर यस और नो। सो देर आर 9 डिजिटल पिन्स इन योर नोड एमसीयू, देर इज ओनली वन एनालॉग पिन। और पता नहीं ये चाइनीज गधों को कब समझेगा कि ये इंटरनली लिमिटेशन नहीं है, ये नोड एमसीयू ने लिमिटेशन डाला है कि दे हैव ओनली वन एनालॉग इनपुट। there is easily ESP can make more inputs and get rid of Arduino completely from the market, but this is the only limitations that they have kept, कि ओनली वन। उनको कहना है कि भाई आप और नोड एमसीयू खरीद लो, हमको अगर ज्यादा आयो चाहिए आपको, तो आप हमसे ज्यादा नोड एमसीयू खरीद लो, उनका ये लॉजिक है। विच इज नॉट वेरी ट्रू, क्योंकि आजकल एनालॉग मल्टीप्लेक्सर आते हैं जो 16 इनपुट सीधा मल्टीप्लेक्स करके एक चैनल पे देते, एंड देन यू कैन यूज इट फॉर मल्टीपल इनपुट। बट ये एक एक्स्ट्रा चीज खरीदनी पड़ती है, मतलब आपको बैग के साथ लॉक अलग से खरीदना पड़ेगा। you can make a bag with a lock na, so it's not very difficult thing, but still they do it. I think after this lecture, if any of the expressive YouTube पे सुन रहा है और वो हिंदी बंदा है, तो शायद मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझ में आ जाए। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं जैसे ही वो ज्यादा इनपुट दे देंगे, इट कैन टेक आउट आर्डिनो कंप्लीटली फ्रॉम द मार्केट। आर्डिनो ये एक इटालिक कंपनी है, इटालियन कंपनी है, एक्सप्रेसिव चाइनीज कंपनी है, सो ऑब्वियसली कंपटीशन इज देयर। पर आई वुड लाइक टू सी दैट एक्सप्रेसिव इस बार इटालियन कंपनी को पीछे डाल दे, क्योंकि जब तक मार्केट में कंपटीशन बना है तभी तक अपने को अच्छे अच्छे बोर्ड्स मिलते रहेंगे। तो जैसे ही ये कंपटीशन खत्म हो गया, जैसे आप देखते हो इंटेल और एएमडी दो ही कंपनी बचे हैं, तो आपके प्रोसेसर्स के रेट कभी कम नहीं होंगे, वो आज भी 5,000 10,000 में प्रोसेसर बेच रहे हैं।
वही पता चला इंडियन मैन्युफैक्चरर भी इंटेल जैसे चिप बनाने लग गया, तो अपने आप कॉस्ट कम हो जाएगी। आप जानते हो ASML करके कंपनी है जो अकेली पूरे माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करती है, तो उनका एक एक मशीन 13 करोड़ 15 करोड़ में बिकता है, बिकॉज देयर इज नो कंपटीशन, एंड नो कंपटीशन इज डेंजरस फॉर एवरीवन। ओके, सो वन शुड क्रिएट अ कॉम्पिटिशन। उनको हम प्रोप्राइटरी डीलर्स बोलते हैं। उसके 3 कोटेशन भी नहीं मिलते, एक ही कोटेशन आता है। तो यू कैन इमेजिन, इफ यू आर गोइंग टू बिल्ड अ स्टार्टअप, फर्स्ट थिंग इज ट्राई टू बिल्ड अ प्रोप्राइटरी स्टार्टअप, या फिर try to build something which is not having many competitors in the market. Next is UART. So UART एक तरह का एलियन वर्ड है वापस आप लोगों के लिए। इट्स असिंक्रोनस रिसेप्शन एंड ट्रांसमीटर। आई नो थर्ड ईयर वाले बच्चे बोल रहे हैं नहीं ये एलियन वर्ड नहीं है, हम जानते हैं यूआरट क्या होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वापस भी सुन सकते हो। So UART is Universal Asynchronous Reception Transmitter. So it obviously has only two pins, TXD और RXD। और ये बहुत गलत कंसेप्ट है क्योंकि उसको थर्ड पिन लगती ही लगती है कि ग्राउंड। ठीक है, आप लॉजिक 1 है या लॉजिक 0 है बता ही नहीं सकते इफ यू डोंट हैव ग्राउंड। ओनली टू पिन्स कैन नॉट टेल दैट, ऑब्वियसली फॉर बोथ डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। ज्यादातर नोड एमसीयू में TXD RXD पिन, सिंस इट्स अ वाईफाई बोर्ड, वी डोंट नीड दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशंस, बट बहुत सारे सेंसर्स यूआर्ट बेस्ड आते हैं तो वो खुद डेटा TXD RXD में भेजते हैं, तो उनको रिसीव करने के लिए ये फीचर आपको दिया गया है। एंड सेकेंडली, आपको प्रोग्राम अपलोड करना है कंप्यूटर से इस बोर्ड पे, उस वक्त वायर के थ्रू ही होता है। I know that is idiotic. They could have easily made it Wi-Fi based. They tried it with Arduino Wi-Fi। 5000 का एक बोर्ड आता था जो वायरलेसली प्रोग्राम भी होता था, बट इट्स अ बिग फेलियर, सो जस्ट फॉरगेट इट। रीजन इज वाईफाई एस्टेब्लिश करने के लिए पहला कोड तो कभी ना कभी जाना पड़ेगा ना, SSID पासवर्ड से कनेक्ट होने के लिए। तो इसीलिए आजकल देर इज समथिंग कॉल्ड एज हेडलेस मोड, जिसमें एक बार आप सेटअप कर दोगे उसके बाद नोड एमसीयू को ओवर द इंटरनेट ही आप कंट्रोल कर सकते हो या फिर उनको रीप्रोग्राम कर सकते हो। सो TXD एंड RXD पिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर leading to the first program into the microcontroller. Then there is something called as SPI communication। SPI communication एक तरह का और एक तरह का सीरियल कम्युनिकेशन है। मेरा अलग से एक लेक्चर है हर तरह के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स पे जो आप यूट्यूब चैनल से देख सकते हो। I think I have explained all the different kinds of communication protocols upcoming also, even from JTAG, SPI, I2C, one wire, serial, everything is explained in that lecture. But obviously you can search them on internet also. Then there is a node MCU prototyping board that can use I2C communication। I2C communication ये obviously simpler than UART है क्योंकि वो बहुत सारे डिवाइसेस से सिर्फ दो वायर पे ही बात कर सकता है। सो ये टू वायर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है और इसमें SDA और SCL मतलब क्लॉक और डेटा दो ही पिन लगते हैं। देन हार्डवेयर की डिटेल्स में जाए नोड एमसीयू के, तो एक इनबिल्ट एंटीना रहता है 2.4 गीगाहर्ट्ज का, एक रीसेट एलईडी दिया गया है, ऑनबोर्ड पावर बटन है, USB CP2102, ये एक सबसे सस्ता कंपनी है। 21 CP21XX होता है, तो इसमें 02 लगा हुआ है विच इज द सेकंड वर्जन, जो USB को UART में कन्वर्ट करता है, जिससे आप प्रोग्रामिंग USB के थ्रू माइक्रो कंट्रोलर पे कर सकते हो। तो बहुत सारी पीसी में CP2102 का ड्राइवर इंस्टॉल्ड नहीं होता और जिसकी वजह से नोड MCU काम नहीं करता। देन वी हैव टू बटन्स। तो लोगों को लगता है दो रिसेट बटन है, ऐसा नहीं है, एक ही रिसेट बटन है यूएसबी के इस साइड, और ऊपर वाले साइड यूएसबी के फ्लैश बटन है जो प्रोग्राम अपलोड करते वक्त 1 सेकंड के लिए दबाना होता है, दबा के छोड़ोगे तो ही प्रोग्राम अपलोड होता है। और सेल्फ रिसेट फैसिलिटी की वजह से कभी कभी डायरेक्ट प्रोग्राम भी अपलोड होता है, पर आइडियली if you want to upload the program you have to press this flash button onto your node MCU। uh, then we have 3.3 volt regulator which is 1117, and then you have your actual ESP IC
अभी ESP8266 इसके ऊपर भी खुद जो चिप लगी है वो है ESP12E। सो ESP1 2 3 4 ऐसे अलग अलग ESP के चिप आते हैं। आई विल जस्ट गो बैक टू द main website and I will just say ESP chips. So I would say different ESP chips. Let me just check. फोटो में कहीं ना कहीं तो दिया होगा उन्होंने। सो बेसिकली ये फोटो बहुत सारी चीज़ें बता रहा है। ये एक्चुअली ESP चिप है 12E, जिसको फॉर्म फैक्टर से इस तरह से ESP8266 में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसको फॉर्म फैक्टर के हिसाब से नोड MCU में कन्वर्ट किया जाता है। So over the node MCU, where whether it is ESP8266 और ESP32 वो पहले चेक करो, और उसके बाद उसके अंदर चिप कौन सा लगा है, मतलब ESP01 है, 02 है, 03 है, 4 है, 5 है, ESP12 है, E है। तो इस तरह से ये ESP के चिप्स होते हैं, अलग अलग चिप्स मिलते हैं। एंड यू कैन 7S भी है, 8S भी है, 9S भी चल रहा है अभी मार्केट में। So you can then find its own characteristics. So it's not कि सिर्फ एक ही ESP चिप होता है, ESP के बहुत सारे वर्जन्स है, और ये कंपनी नए नए वर्जन्स बनाते जाती है। ये सारे ही प्रोग्रामिंग आर्म आर्किटेक्चर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट पे बेस्ड है। So they are very compatible to your mobile programming, and you can see different versions of this market available chips. Everything is Wi-Fi based, so you don't have to worry. Initial versions आजकल ESP1 to 5 मिलते नहीं है, बिकॉज दे आर, मतलब अभी वो रिडंडेंट हो चुके हैं, कोई बनाता ही नहीं है। तो जो मार्केट में पहले आए उसी का सेकंड हैंड कॉपी आपको मिल जाए, या जो बिके नहीं थे उस वक्त वही कॉपी आपको मिल सकते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट देयर आर मेनी डिफरेंट चिप्स, एंड डोंट टेल मी कि हम IoT प्रोग्रामिंग जानते हैं और हम इसमें से इंडिविजुअल चिप को प्रोग्राम नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज सेम। सो right from ESP8266, ESP32, ESP1 2, everything same programming language. So you don't worry about it. Only few changes here and there. I will tell you exactly where to do these changes. So these are the hardware details of my Node MCU. नाउ ESP12E माइक्रो कंट्रोलर के फीचर्स क्या है, जैसे मैंने बताया कि वो अभी 0 वोल्ट का माइक्रो कंट्रोलर बचा ही नहीं है। आई थिंक आई कैन गेट रिड ऑफ दिस थिंग। ओके, सो इट्स अ 32 बिट प्रोसेसर। तो अभी वो 8 बिट से 32 बिट में ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। इट रिक्वायर्स वोल्टेज बिटवीन 3 to 3.6 वोल्ट्स। तो बहुत बार बच्चे यहाँ पे नोड एमसीयू खराब कर देते हैं 5 वोल्ट के। बिल्कुल नहीं करना है, 3 से 3.6 वोल्ट ही उसको मिलना चाहिए। करंट रिक्वायरमेंट इज अराउंड 80 मिली एम्पियर व्हेन इट इज फुल्ली प्रोसेसिंग with all its core available. Flash memory can go up to 4 MB, so that is a large data space to write any program. आप बोलोगे 4 MB, तो आपको बता दूं कि जो पहला मून पे लैंड हुआ मशीन था, जो पूरा मार्स रोवर और जो आपका मून रोवर था, उसमें भी 4 MB थी। तो पूरा वो फर्स्ट मोशन जो मून पे लैंड होके खुद से फोटो खींच के वापस आया था, उसका पूरा प्रोग्रामिंग 4 MB में फिट हो गया था। तो 4 MB कोई छोटी मेमोरी नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा आप 100-200 लाइन का कोड लिखते हो, एंड विच गेट्स कन्वर्ट टू फ्यू बाइट्स, या फिर एट मैक्स 1 KB। 1 KB के लिए भी आपको रफली 150 से 500 लाइन का कोड लिखना पड़ता है। तो 4 MB यू कैन इमेजिन बहुत ही ज़्यादा फ्लैश मेमोरी है। SRAM 64 KB है, जहाँ पे आप टेम्पररी स्टोरेज कर सकते हो। डिजिटल पिन्स 9 है, हमने देख लिया। एनालॉग पिन 1 है, वो भी हमने देख लिया। SPI पोर्ट, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, ये एक पोर्ट दिया हुआ है। UART एक पोर्ट है, I2C एक पोर्ट है, 1 वायर सपोर्ट है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है IEEE 802.11। अब ये नाम हम जनरली बोलते नहीं है, पर ये वाईफाई का टेक्निकल नाम है। 802.11 प्रोटोकॉल के अंदर वाईफाई डिफाइन किया हुआ है, और उसके बी, जी और एन आजकल
इससे आगे जा चुका है, पर बेसिकली BGN इस पे सपोर्टेड है। तो याद रखो, घर में 5.5 गीगाहर्ट्ज पे ट्रांसमिशन चलने वाला SSID पासवर्ड ESP8266 के साथ कंपैटिबल नहीं है। ठीक है, इवन आपने मोबाइल से हॉटस्पॉट क्रिएट किया और उसको 5 गीगाहर्ट्ज के वाईफाई पे अगर चालू किया तो ESP8266 उससे बात नहीं कर पाता। आपका वाईफाई ये ISM बैंड 2.4 गीगाहर्ट्ज का ही है, विच इज द ओल्ड वाईफाई। वाईफाई में दो तरह के वाईफाई होते हैं, एक होता है 5G वाईफाई या फिर 5 गीगाहर्ट्ज वाईफाई, और दूसरा होता है 2.4G वाईफाई और 2.4 गीगाहर्ट्ज वाईफाई। तो बहुत सारे बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता कि वाईफाई 5G है और उस पे नोड MCU कनेक्ट कभी होगा ही नहीं, और फिर बच्चे छोड़ देते काम करना। क्योंकि कैसा है, पहली बार प्रोग्रामिंग सक्सेस नहीं हुआ तो फिर देर इज लॉट ऑफ डीमोटिवेशन, एंड देयर मस्ट बी अ पर्सन हु शुड एबल टू आइडेंटिफाई कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मिस्टेक, एंड यू आर द पर्सन नाउ हु नोज कि देर आर टू टाइप्स ऑफ वाईफाई। आप फोन में हॉटस्पॉट में जाके सेट कर सकते हो कि आपको कौन से गीगाहर्ट्ज का वाईफाई चालू करना है। फोन का हॉटस्पॉट क्या होता है, जब वो खुद सॉफ्ट एपी डिफाइन करके खुद ही SSID पासवर्ड लोगों के लिए देता है। इसको जनरली यूज कब किया जाता है, जब आपके दोस्त के पास इंटरनेट पैक नहीं है और आपके पास इंटरनेट पैक है, तो आप इंटरनेट शेयर करने के लिए वाईफाई हॉटस्पॉट क्रिएट करते हो। बहुत बार मेरा लेक्चर में कभी कभी पीछे का इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है, तो मुझे आपसे फिर भी बात करनी है या आपको बोर करना है, तो मैं हॉटस्पॉट चालू करके कनेक्ट हो जाता हूँ। मे बी आई मे नॉट शेयर द वीडियो, बट दैट इज हाउ द इंटरनेट इज बीइंग शेयर्ड थ्रू द वाईफाई हॉटस्पॉट। सो ऑब्वियसली अगर मैं PC के साथ कनेक्ट करना चाहूँगा तो मैं 5G वाईफाई ही लूँगा, क्योंकि वो फास्ट है। सिंपल सा लॉजिक है। ये 5G पे ही बाय डिफ़ॉल्ट क्यों होता है, बिकॉज दैट इज़ फास्ट। आपके घर में भी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो बहुत सारे घरों में से 2.4 गीगाहर्ट्ज या ड्यूअल बैंड वाईफाई दिखता है। तो आपको घर में दो नेटवर्क दिखाई देंगे, अगर आपने 2017 के बाद राउटर खरीदा है तो डेफिनेटली यू विल हैव टू नेटवर्क्स। एक 5G लिखा होगा, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जा में रहते हैं कि मोबाइल 5G और ये 5G सेम है, तो बिल्कुल नहीं। ये वाईफाई का 5 गीगाहर्ट्ज पे ट्रांसमिशन होता है, टिपिकली 5.5 गीगाहर्ट्ज के अराउंड। सो इसीलिए उसको 5G बोलते हैं। और 2.4G मतलब कोई पुराना टेक्नोलॉजी नहीं है, वो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे ट्रांसमिशन होता है। मोबाइल में 2.4G जैसी कोई चीज थी ही नहीं, 2.5G था, एज था, 2G था, 3G था, 4G था, और अभी 5G आ रहा है। So don't get confused between the Wi-Fi 5G and your mobile network का 5G, correct? So अगर आपको कोई शॉपकीपर बोलता है कि इसमें 5G वाईफाई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 5G टेक्नोलॉजी का कम्युनिकेशन हैंडल कर सकता है। So I think this is clear. With this ESP12 you get 2.4 GHz वाईफाई। तो ये एक बड़ी मिस्टेक अवॉइड करनी है। दूसरी बड़ी मिस्टेक क्या अवॉइड करनी है प्रोग्रामिंग करते वक्त, USB केबल की। So let us start with the programming lecture. With this all background introduction, now we actually go to the programming part. So I want all of you to try with me. हाँ? अगर कहीं पीछे पड़ जाओ तो मुझे बोलना, सर 2 मिनट रुको मैं कर रहा हूँ। अगर स्लो इंटरनेट है तो ज़्यादा टाइम लग सकता है। इन दैट केस वी माइट प्रोसीड अहेड, बट यू साइमल्टेनियसली कीप डूइंग दिस। तो अभी मेरे साथ ये करो, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि फर्स्ट थिंग इज यू गो टू द गूगल क्रोम। ठीक है, क्रोम की कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करनी मुझे, तो आप फायरफॉक्स खोलना चाहते हो फायरफॉक्स खोलो, एज खोलना चाहते हो एज खोलो। आजकल कुछ ब्रेव करके ब्राउजर आया है, वो भी खोल सकते हो। मोबाइल से सुन रहे हो तो मोबाइल का भी खुद का एक ब्राउजर होता है, सफारी वगैरह। आईफोन वाले तो सफारी यूज करते हैं। तो एनी ब्राउजर यू ओपन एंड टाइप आर्डिनो। ठीक है, अब मोबाइल वाले सिर्फ ऑनलाइन आर्डिनो यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनका आर्म आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। और आर्डिनो सॉफ्टवेयर जो है, जो इंस्टॉल होता है पीसी में, वो x64 या x86 को सपोर्ट करता है। तो दे कैन नॉट इंस्टॉल इट, बट दे कैन स्टिल यूज अ ऑनलाइन वर्जन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। I preferably ask students not to download the version 2.0 onwards for the Arduino, because it's still under development. It's not a stable version. So 1.8 was the last stable version. So I will just do it with you.
जो मैंने मेरे ही स्लाइड में लिखा है वो करके देखते हैं। सो आई विल जस्ट टाइप आर्डिनो। तो आर्डिनो, बात को समझो, दो चीजें हैं आर्डिनो। एक आर्डिनो बोर्ड है जो इस तरह से दिखता है, और एक आर्डिनो सॉफ्टवेयर है जिससे हम प्रोग्रामिंग करते हैं। सो यू हैव टू सी दिस वेबसाइट कॉल्ड arduino.cc, और उसमें आपको क्लिक करना है एंड यू हैव टू क्लिक ऑन दिस टैब कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आप देखोगे कि लेटेस्ट वर्जन ऑफ आर्डिनो क्या चल रहा है, 2.02। ठीक है, आपको ओल्ड वर्जन ऑफ आर्डिनो चाहिए। ठीक है, सो लेगेसी 1.8x, उसमें 1.8.19 ये सबसे अच्छा वर्जन है। ऐसा हो ही सकता है कि 2.02 अभी बहुत एडवांस हो गया है और वो यूज करना आपको अच्छा लगे, बट अभी के लिए, मतलब जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाता, मे बी और 6 महीने के लिए यू कैन कीप यूजिंग 1.8x। सो विंडोज 7 वाला ये क्लिक डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन समझने की कोशिश करते हैं। लेट मी जस्ट जूम इन अ बिट। यस, oh, unfortunately I forgot to share the entire screen. Thank you for telling me. Okay, so I think I should go back then. We missed out everything. So when you go to the Chrome browser, this is the Google Chrome, you type Arduino and then click on this Arduino home. Okay. Then you click on this software. ठीक है, जो मोबाइल में से कोडिंग करना चाहते हैं, दे हैव टू क्लिक ऑन कोड ऑनलाइन एंड जस्ट स्टार्ट कोडिंग। बट फॉर मी, even I am not recommending the latest version of Arduino 2.02, or because it's not stable and there are many more libraries which are yet to transform from Arduino's old version to new version. So I would like you to scroll down, come to the legacy build of Arduino, which is 1.8.x। currently x जो है वो 19 चल रहा है, तो this is Arduino IDE 1.8.19। उसमें आपके पास ये ऑप्शन है, विंडोज 7 एंड न्यूअर। सो ऑब्वियसली जिनके पास विंडोज 10 या 11 है, दे शुड चूज दिस। विंडोज जिप फाइल, जो एडमिन नहीं है कंप्यूटर के, जो मे बी आपका भाई उस लैपटॉप का एडमिन है या आप कॉलेज में यूज़ कर रहे हो, तो कॉलेज ने आपको एडमिन एक्सेस नहीं दे रखा है ताकि आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करो, तो उनके लिए सीधा जिप फाइल है। ये पोर्टेबल वर्जन ऑफ आर्डिनो होता है, तो इसको डबल क्लिक करके सिर्फ डाउनलोड एंड इंस्टॉल करोगे तो हो जाएगा। अगर विंडोज 8.1 और 10 है तो यू कैन गेट द आर्डिनो फ्रॉम द ऐप स्टोर, बट आई विल नॉट रिकमेंड दिस थिंग अगेन। आपको विंडोज 7 एंड न्यूअर वाला स्टैंडर्ड वर्जन ही डाउनलोड करना है। लिनक्स सिस्टम है तो यू कैन थिंक ऑफ लिनक्स 32 बिट, 64 बिट। अगर आपके पास मोबाइल है, ठीक है, तो मोस्टली मोबाइल आपका 64 या 32 बिट का होगा, तो आर्म 32 या 64 बिट आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के पास वो स्पेशल सरफेसेस जैसे मोबाइल लैपटॉप होते हैं, दे आर आर्म बेस्ड लैपटॉप। तो अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट सरफेस है तो यू कैन गो फॉर आर्म एडिशन ऑफ लिनक्स, एंड देन यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ मैक OS X एंड ऑनवर्ड्स फॉर द लेटेस्ट वर्जन ऑफ मैक। अगर आपके पास मैकबुक है तो आप ये वर्जन ले लो। हम अभी विंडोज 7 एंड न्यूअर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वो कुकीज पूछ रहा है, यू कैन क्लिक ऑन एक्सेप्ट ऑल। फिर वो डोनेशन मांगेगा, सो यू जस्ट हैव टू क्लिक जस्ट डाउनलोड एंड दैट्स इट। सो आई थिंक इट शुड एबल टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर। अभी मेरे पास 112 MB का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, सो ऑलरेडी 50 MB हो चुका है, मे बी फ्यू सेकेंड्स के बाद वो डाउनलोड हो जाएगा पूरा। ठीक है, सो आई थिंक इट्स डन नाउ। Arduino 1.8.19 installed. Let me go back to my presentation now. So go to the Google. All of you can do with me. Type
Arduino, look for the software. If not, directly click on Arduino home and then click on the software. Yeah, my screen is not visible. Okay, let me just stop my screen. Okay, is my screen visible? Yeah, no. Is it visible now? Okay. So this is how it should look like. When you click on Arduino, search Arduino, you should get this thing and click on Arduino home. Okay. Here you'll see lot of tabs. You have to click on this software tab. Okay. Then you come down to legacy version 1.8.19 and click on this. I think everybody has done this or doing it. I just check the chat box. Okay. People have questions. Sir, why does Lolin MCU pins when we can't use it with breadboards? Okay, so the answer to this is basically the pins can be connected to a buck connector. I will just show you how the buck connector looks like. Mm, so let me just get it down. By the time people are downloading Arduino software, I will just show you. So male to female jumper wire. तो इस तरह के वायर्स मिल जाते हैं आपको जो आप लोलिन बोर्ड में लगा सकते हो, ठीक है। और फिर ये वायर फ्री है तो ये आप कहीं भी लगा सकते हो। सो दिस इज हाउ द लोलिन प्रॉब्लम इज सॉल्व। और लोलिन ने वो ब्रेडबोर्ड वालों के लिए बनाई नहीं है, और क्यों नहीं बना मुझे पता नहीं। दे वांट एक्सपर्ट्स टू यूज इट। तो डायरेक्टली ये वायर लग जाते हैं, ये एंड फीमेल जिसको बोलते हैं हम, बक कनेक्टर का फीमेल उसको लगा दो एंड इट शुड एबल टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू द सेंसर। जनरली सेंसर्स पे भी मेल रहते हैं तो आपको फीमेल टू फीमेल वायर लगेंगे। ये अभी जो फोटो में दिख रहा है इसको हम बोलते हैं मेल टू फीमेल वायर। मेल वाला कनेक्टर है, यहाँ से ये छोटे छोटे पिंस बाहर आए रहते हैं, ठीक है। दिस इज मेल कनेक्टर एंड देन ऑन दिस अदर साइड यू विल हैव फीमेल कनेक्टर, जहाँ पे वो छोटी सी जो मेटल की रॉड है वो इंसर्ट हो सकती है। सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। लेट मी गो बैक टू द chat. Okay. Any more questions? Everyone is downloading? Okay. So once we have finished downloading, I will just start my screen sharing again. Okay. So then you have to double click on this exe file. तो पहले वो विंडोज ये पूछेगा आपको कि डू यू वांट टू रन दिस ऐप, ठीक है। अभी मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सो इट विल गिव मी एन एरर। ओके, so I don't want to uninstall it, so I can just close it, but you should see something like this. Let me go back to the presentation. So type Arduino, then look for, उन्होंने अभी 1.8.15 जब मैंने लेक्चर बनाया था उस वक्त वो लेटेस्ट वर्जन था। So look for this particular type, then click on just download, which we already did. Then
Once you double click, you should see Arduino license agreement. और जैसे हम सारे एग्रीमेंट्स के साथ करते हैं, स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक आई एग्री. ठीक है. आइडियली सारे एग्रीमेंट पढ़ने होते हैं, पर आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने शायद 1998 से कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ एंड आई हैव एवर रीड एनी लाइसेंस एग्रीमेंट. सो आप लोग भी शायद यही करते होंगे. हार्डली कोई बच्चा मुझे मिला है जिसने कहा कि मैं पूरा एग्रीमेंट पढ़ता हूँ और देन आई क्लिक आई एग्री और कैंसिल. क्योंकि अपने को सॉफ्टवेयर यूज करना है और सॉफ्टवेयर वालों को रिस्ट्रिक्शन दिए रहते हैं, कुछ कुछ चीज़ें मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स में उनको बतानी पड़ती है. तो दे हैव टू get this agreement signed from everyone who is using this software. So you should click on I agree. Again, you should see this window. I hope you are seeing this window. If you are getting any other window, please let me know. ठीक है. यहाँ पे आपको सारे टिक ऑन करने हैं. ठीक है. अगर आप डेस्कटॉप पे शॉर्टकट नहीं चाहते तो वो दो शॉर्टकट वाले टिक नॉन सिलेक्ट कर सकते हो. बट डॉट आईएनओ फाइल का एसोसिएशन, यूएसबी ड्राइवर का एसोसिएशन और इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर, ये टिक तो होने ही चाहिए. ठीक है. देन यू क्लिक नेक्स्ट. आई होप यू आर डूइंग इट विथ मी. ऑब्वियसली जब मैं कहता हूँ तो आई ओनली टॉक टू द 10% पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग इट. So generally when we have students count of 400, then 40 students are doing it. Now we have student count of 48, I guess. So maybe 4 students are doing it. I'm just talking to them. बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग सिर्फ सुन रहे हैं, करेक्ट? तो एटलीस्ट देखो ठीक से. क्योंकि सारे लोग पानी डालोगे. हम्म, आपने वो स्टोरी सुनी है ना, दूध राजा ने डालने बोला था, तो बीच में मेरे एक हंडा पानी डालने से क्या ही फर्क पड़ने वाला है. तो ये आज वही कर हो रहा है ऑनलाइन एजुकेशन में कि सारे लोग पानी डाल रहे हैं. एक दो बंदे आज भी दूध डाल देते हैं तो कलर तो आ ही जाता है. एंड आई शुड बी एबल टू चेंज दिस मेंटालिटी. तो मेरे बोलने से किसी को बुरा लगा है तो प्लीज स्टार्ट डूइंग इट. क्योंकि सही चीज करने के लिए कोई सही टाइम नहीं होता. करो अभी के अभी. सो आई थिंक आर्डिनो सेटअप इंस्टॉलेशन फोल्डर आपने दे दिया. क्लिक ऑन इंस्टॉल एंड देन वेट. तो बहुत सारे फाइल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं. जो जो हमने अभी 112 एमबी का सेटअप डाउनलोड किया है, उसमें से 540 या 524 एमबी का इंस्टॉलेशन हो रहा है. ऑलमोस्ट 5 टाइम्स फाइल एक्सट्रैक्ट होंगे. एंड फाइनली you should see this completed window and you can click on close. I will just go back to the chat box. Those who have finished can ask their doubts. Those who are still doing it can let me know. You can just type yes or no. Okay, once you have finished, just type yes. So I will just stop share and see the chat box. Okay. Rudra has finished. Rohit has finished. Richa has finished. Very good. Okay. Muskan also finished. So I found my 4 students. The ratio is still maintained. 40 में से 4. I hope others are still doing it and that's good. कि स्लो पीसी होने के बावजूद आप लोग ये लेक्चर में ट्राई कर रहे हैं. Okay, Ayush has also finished. That's good. Now we have 5 students. I will wait for 1 more second क्योंकि अभी 2 घंटा बोल बोल के मेरा घसा दर्द कर रहा है. Okay. Okay. Ria has also finished. Very good. Okay.
Okay, so they have done a Arduino workshop, so then they do need, they they already had this. लेकिन अगर आपने Arduino वर्कशॉप में 2.02 वर्जन डाउनलोड किया था तो प्लीज रीडू इट. You can keep both versions on the PC. There is no issue at all. Okay, so let us move ahead now. Uh, Sufficient number of people are doing it. At least they are saying they are doing it. Okay, so once you click on close, I hope my screen is back and you can see it. Okay, so once you click close, then you have to press Windows button and start typing Arduino, and you should see the Arduino app. Just click on that. So let me just do it with you. So I will press Windows button. I will start typing Arduino, and I should see my Arduino app, and I click on this app. So it will take some time because it's the first time if you are opening it. अभी कुछ कुछ मॉडिफिकेशन अपने को करने पड़ते हैं Arduino सॉफ्टवेयर में टू गेट स्टार्टेड विद IoT प्रोग्रामिंग. आई विल टेल यू दोस नाउ. Okay, so it will take a lot of time and then it should start like this. Sketch on. फिर जो भी वो वर्जन है वो अपने आप लिख के आएगा. मेरे केस में अभी दिखाई दे रहा है आपको Arduino Blink 18.19 इस तरह से खुला सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो शायद मैंने लास्ट टाइम MKR 1000 पे कुछ प्रोग्रामिंग की थी इसलिए वो कोड खुला. आपके साथ ये शायद नहीं खुलेगा. नेक्स्ट इज once you do that you have to go to the file. ओके, यहाँ पे आपको जाना है प्रेफरेंस में. ठीक है, so I will just go back to the PPT. There are two things you should see when you start a new Arduino. One is void setup which is a blank loop. यहाँ पे ऐसा कोडिंग आता है जो एक ही बार रन होगा which is generally initialization or configuration. And then we have void loop which is running a loop that is running forever loop. तो जनरली हर एम्बेडेड सिस्टम लूप में ही चलती है. सेटअप एक ही बार होके जब वो पावर ऑन होता है तब सेटअप करके सारी एम्बेडेड रियल टाइम सिस्टम्स ये लूप में ही चलती रहती है. दे कीप ऑन मॉनिटरिंग, अरे कुछ हो रहा है क्या, अरे कुछ हो रहा है क्या, अरे कुछ हो रहा है, अरे ये हो गया करके. देन इट टेक्स द एक्शन एंड अगेन इट गोज बैक टू द लूप वॉचिंग. सो जनरली ये प्रोग्रामिंग सीक्वेंस, मतलब इस तरह की प्रोग्रामिंग हम सी प्रोग्रामिंग में सीखे नहीं है कि लूप में चलाते रहो. तो आप वाइल और कोई नॉन सेटिस्फाइंग कंडीशन डाल दोगे तो आप लूप का रूप बना सकते हो. ठीक है, बिकॉज वाइड लूप करके कोई रेगुलर सी प्रोग्रामिंग में चीज़ होती नहीं है. तो आपने आर्डिनो प्रोग्रामिंग अगर पहले से सीखी है तो आपको ये चीज़ पता होगी कि ये एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग है. इसमें रेगुलर सी के कमांड्स चलते हैं लेकिन इसके खुद के भी कुछ स्पेशलाइज कमांड्स होते हैं which we can use. So now you go to the file button, go to the preferences. ठीक है, and now you have to paste this particular line. अभी ये बड़ा सा लाइन मैंने लिखा रखा है. ऑब्वियसली आपको ये याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. तो व्हाट आई वुड से is package esp8266 com index json. Okay, so you go back to the Google. Okay, and here type something called as json esp8266. ठीक है, आपको जेसन फाइल चाहिए फॉर व्हाट सॉफ्टवेयर फॉर आर्डुइनो. ठीक है, एंड देन यू नीड दैट पर्टिकुलर लिंक. ओके,
So this is the link. I will just paste this link for you into the chat window. Okay, I think everybody has received it. So let us go back to the PowerPoint. Okay, so you click on this. I will also do it with you. So let me just go back to the Arduino software. So you can see there are different बोर्ड्स. मेरे पास ऑलरेडी वो ESP32 और ESP8266 की लिंक्स पेस्ट है, तो आपके पास भी अगर ESP32 की भी है मेरे पास, so I will just put that also in case you want to go for the directly ESP32 programming board. और अगर दोनों साथ में है तो जैसे ये पहली लिंक खत्म होती है उसके बाद एक कॉमा देके नेक्स्ट लिंक डाल दो। तो अभी आज ESP32 है, में भी 10 साल बाद अपने को यहाँ 10 लिंक डालने पड़ सकते हैं, नए नए वर्जन्स तो आते ही रहेंगे। सो आइडियली यू शुड हैव बोथ ऑफ देम एंड देन क्लिक ओके। ठीक है, उसके बाद लेकिन आपको आर्डिनो रिस्टार्ट करना है। ठीक है, सो वंस यू क्लिक ओके, यू क्लोज डाउन द आर्डिनो विंडो एंड रीस्टार्ट इट। सो अगेन प्रेस विंडोज, स्टार्ट टाइपिंग आर्डिनो एंड देन क्लिक एंटर. So now it will take all the new boards which are available. Okay, so basically this is the source of that particular JSON file, and just copy it and put it into your chat now. So for what kind of boards do we need to provide the link? Okay, so typically दो ही board है on a broader scale, ESP32 or ESP8266. If you have any specialized board, for that you have to again get the link, but ज़्यादातर ये दो बोर्ड में कवर हो जाते हैं। तो आई विल जस्ट शो यू कि कितने सारे बोर्ड इसमें कवर हो रहे हैं। सो ये दो लिंक डालने की वजह से, सिर्फ दो लिंक डालने की वजह से नाउ वी विल सी कि यहाँ टूल्स में जाके यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिर्फ आर्डिनो बोर्ड्स रहता है, बट सिंस वी हैव इंक्लूडेड टू मोर लिंक्स, यहाँ पे देखो ESP32 के इतने सारे बोर्ड अभी आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे। ये इतने सारे बोर्ड्स अपने आप आर्डिनो कंपैटिबल हो गए हैं। रफली 63 या 64 होंगे ये। यू कैन सी सो मेनी ऑफ देम आर ऑलरेडी। तो आप अभी पूछोगे इनमें से कौन सा बोर्ड लेना चाहिए, सो दैट इज अप टू यू। ये सिर्फ ESP32 के वर्जन से, ये ESP8266 के वर्जन से। ठीक है, तो ESP8266 के थोड़े कम वर्जन से कंपेयर टू ESP32। अब यहाँ पे देखो कि ESP12E मॉड्यूल के साथ, 12 के साथ, या फिर लेमन 4 के साथ, ESP8266 थिंग, ESP8266 वाईफाई, फोनिक्स 1.0, ये सारे बोर्ड आपको मार्केट में मिलते हैं। तो ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ ESP8266। नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन आप इसमें से कौन सा बोर्ड खरीद रहे हो। करेक्ट। सो आप उसमें अगर कोई आपको पूछेगा कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ एन सैमसंग फोन, करेक्ट, सो यू कैन टेल मी द प्राइस, यू कैन टेल मी द रेंज, बट आप अगर स्पेसिफिक मॉडल नंबर बोलोगे कि सैमसंग का S22 अल्ट्रा मॉडल जो है उसकी प्राइस क्या है, देन ओनली वन कैन टेल यू। So you can imagine this ESP8266 is like a big company, and inside that you have so many models. ठीक है, मे बी ये ESP32 Vivo है जिसके अंदर ज़्यादा मॉडल्स है। सो दीज आर द मॉडल्स अवेलेबल। सो आप ऐसे कभी मत पूछना कि ESP32 नोड MCU चाहिए, यू हैव टू स्पेसिफाई इट कि इसमें से कौन सा बोर्ड चाहिए। ऑब्वियसली सारे बोर्ड्स का नॉलेज आपके पास होगा नहीं, तो एटलीस्ट जो दो बेसिक बोर्ड है, नोड MCU और आपका ESP32 का 12E वर्जन नोड MCU, ये दो कॉमन है। ठीक है, सो यू कैन चूज नोड MCU 1.0 with ESP12E module, which is energy efficient version of ESP12.
So this is the most standard one. But whenever you get your node MCU, अगर अभी किसी के पास है तो just use a magnifying glass या फिर फोटो खींच लो एंड देन जूम करके देख लेना कि आपके पास ESP का कौन सा मॉड्यूल है. याद रखना जब फोटो खींचते हो और आपको नाम रीड करने होते हैं तो मेटल सरफेस होने की वजह से यू कैन यूज फ्लैश, तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्ट्रास्ट मिल जाएगा. और जनरली हम फ्लैश के साथ ही फोटो खींचते हैं व्हेन वी वांट टू रीड द नंबर्स ऑन द आईसी. ऑब्वियसली जिनकी अच्छी आई साइट है उनको डायरेक्टली भी दिख जाता है, तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. थोड़ा सा आपको आईसी अलग अलग एंगल में ट्विस्ट करके पढ़ना होता है पर हो जाता है मैनेज. सो मेरे लिए तो फोटो लेके नंबर पढ़ना बहुत आसान तरीका है. Okay, so everybody has pasted this link. I hope, and they have restarted the Arduino, and they are also seeing the same thing. Can you just confirm in your chat box? Okay. What about others? Oh, I think they are doing it. हाँ, अभी बहुत सारे लोग yes sir तो बोल रहे हैं. Okay. Uh, I think people are directly messaging me. That's why ma'am is not able to see. You can message everyone yes करके if it is allowed. Okay, fine. So many of you have already done it and they are seeing lot of boards. जो ज्यादा फ्यूचरिस्टिक बच्चे हैं, उन्होंने दोनों लिंक डाल दिए होंगे, है ना. दैट इज इवन गुड. सो नाउ दे आर सीइंग बोथ ESP32 के बोर्ड्स भी और ESP8266 के बोर्ड की. आज के अपने प्रोग्रामिंग के लिए सिर्फ ESP8266 ही काफी है. So let us go back to the presentation. I think my screen is still visible to you. Okay. So now, once you find this file, your next step is to install the board. So go to the tools, go to the board manager. ठीक है. So अभी मेरे यहाँ तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके यहाँ अगर इंस्टॉल्ड नहीं है और आपने सिर्फ लिंक पेस्ट की है तो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस बोर्ड मैनेजर. ठीक है. एंड हियर let it first update and then you start typing ESP8266. ठीक है. So this will be giving you version. So here you can choose the latest version 3.01 and click on install. अभी मेरे पास कौन सा वर्जन है चेक करना होगा मुझे. ऑलरेडी इंस्टॉल्ड में मेरे पास 3.02 है. सो आई विल नॉट डाउनग्रेड माई सेल्फ, आई विल कीप इट 3.02. मुझे रिमूव का ऑप्शन आता है, आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा. So you all have to install 3.02 version of ESP8266 so that all the latest boards are available. And obviously this thing you have to keep updating every time you get a new version of ESP8266. ठीक है. So I think everybody is doing that. Go to the board manager. Okay. Then in the board manager type ESP8266 or node MCU. You should get to that library ESP8266, select the latest version and click on install. And after installed you should see this installed version. Okay. So now we are ready to connect our ESP8266. Can I just know from the chat box key if anyone is having currently ESP8266 with them? Okay, रोहित के पास नहीं है. ठीक है. I think none of you is. वेरी गुड. तुषार तुम्हारे पास खुद का ESP8266 अभी है साथ में. वेरी गुड. वेरी गुड. नोड एमसीयू का कौन सा वर्जन है तुषार?
ओके वो ठीक है, पर उसका वर्जन एमिका है या लोलिन है? ओके, पीछे उल्टा कर लो उसको, पीछे की तरफ साइड लिखा रहता है. So I think amongst the audience only Tushar has it. Okay, so let me go back to the presentation. So now we have to go to the boards and select ESP3212E module if you are having Node MCU version 1.0 with you. If you are having any other versions, after compilation and uploading of the code, it may not run. Okay, or while compilation only or while uploading, you will get an error. So that's where you have to change the board settings. Okay. So once you click on the board ESP12E, you get all the sub options that are the variant within the ESP12E, which you have to keep by default, and you have to select the port. So I will just go back to the Arduino. Now since you don't have Arduino connected, your port option will be disabled like this. But if you go to the Arduino ESP826612E मॉड्यूल, यू कैन सी ये टूल्स के अंदर बहुत सारे ज़्यादा ऑप्शन आ जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपके बिल्ट इन एलईडी 16 हो सकते हैं. अपलोड स्पीड उसका 115200 हो सकता है, विच इज़ बाय डिफ़ॉल्ट ना. देन सीपीयू फ्रीक्वेंसी 80 मेगाहर्ट्ज़ हो सकती है. फ्लैश साइज अलग अलग हो सकते हैं. देन यू हैव डीबग मोड्स अलग अलग. You have different types of debugging available. Then you have your IP variant. uh, then you have your flash variant. You have different C++ option, stack protection option, erase flash option, SSL, MMU, and non 32-bit access. So as a beginner, I would recommend not to change any of these values. Okay, directly let them by default whatever they are. Just select the port and that's it. So let us go back to the presentation. So only Tushar will see the port over here. If he has installed CP2102 library properly into his PC. Okay, so you should get this particular port. Now to know which COM port your PC should select, if you have more than one, then you can go to the file explorer and click on my computer. So I will just do that for you. So you can click on your file explorer and then click on this PC and then click on show more option if it is Windows 11 and click on either properties or device manager. Okay, so generally Windows 11 में थोड़ा सा ये अलग है. So device manager is what you should look for. So this is how you should open it. Or the other option to go to this is click Windows button, start typing device manager. Okay, you should directly see a device manager over here. So अगर आपको कॉम्पोर्ट नहीं पता कौन सा है, बहुत सारे लगे हुए हैं, तो डिवाइस मैनेजर में जैसे ही आप आओगे वहाँ पे आपको इस तरह का स्क्रीन दिखाई देगा. सो गो टू द प्रॉपर्टीज एंड सिलेक्ट डिवाइस मैनेजर. देखो CP210X ये पोर्ट्स में कॉम और यूपीटी के अंदर सिलिकॉन लैब्स विच इज़ द मैन्युफैक्चरर ऑफ CP210X बोर्ड्स,
you should see the COM port number. ठीक है, और ये सेम कॉम पोर्ट है कि नहीं आपके लेट से पीसी पे 4 नोड एमसीयू कनेक्टेड है, तो कौन सा नोड एमसीयू कौन सा है कैसे पता करें? तो आप जैसे ही वो नोड एमसीयू डिस्कनेक्ट करोगे तो ये पोर्ट गायब हो जाएगा, जो भी करेक्ट पोर्ट होगा, और वापस रिकनेक्ट करोगे तो ये पोर्ट वापस आ जाएगा। तो टिपिकली पोर्ट 3, पोर्ट 4, पोर्ट 5, पोर्ट 6 ऐसा ही कुछ नंबर होगा, एनीवेयर बिटवीन 0 to 99। ठीक है, so now we go to the first program or first part of the first program where we type the things void setup into the curly brackets, and this is the configuration file. So obviously आपने आर्डिनो प्रोग्रामिंग अगर की है पहले तो आपको ये बहुत सिंपल लगेगा। यहाँ पे क्या आपको करना है, void लूप भी होता है जो सेकंड पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है जो हमेशा रन होता है। ठीक है, CP2102 is used to convert the UART signals into the USB। UART कौन दे रहा है? माइक्रो कंट्रोलर ESP12E दे रहा है, और USB सिग्नल्स कौन दे रहा है? आपका कंप्यूटर दे रहा है। ठीक है, so now let us once you have done everything, you can click on COM port. It should open like this, showing that the COM port is properly connected. So COM port is directly available in your Arduino IDE. I will just show it to you where it is. सो इफ यू गो बैक टू योर आर्डिनो आईडी, ये कॉर्नर में यहाँ पे सीरियल मॉनिटर करके है ना। मेरे पास अभी कॉम पोर्ट कनेक्टेड नहीं है, तो क्या बता रहा है वो, बोर्ड एट कॉम 5 इज नॉट अवेलेबल। तो जब तक आप बोर्ड कनेक्ट नहीं करोगे वो कॉम पोर्ट खुलेगा नहीं। सो यू हैव टू सिलेक्ट द पर्टिकुलर बोर्ड एंड देन सिलेक्ट द करेक्ट कॉम पोर्ट। तो अभी सिर्फ तुषार के पास वो कॉम पोर्ट खुलेगा। So that is generally this is the end of second hour. So lecture 2 is finished. Or I want you to now ask any doubts at this moment before we go into the actual slog hours of programming. So chat box is open. Yeah, तुषार, ओके, खुद के लिए क्वेश्चन लिख के रखा है क्या? यस। Yeah, exactly. So for that now we have to install the driver onto your PC. So you can search for 21 CP210X drivers onto your Chrome window and download the zip file of the drivers, because Arduino by default only gives the driver for the Arduino boards and not for these other boards. So based on that, you have to now install the libraries. So if you have connected the board first time to the PC, you will not see the drivers already installed. So look for CP21. I will just show it to you. I think my screen is visible to you all. So let us go back and go to the google.com and type CP21. Now, since I don't know what version of 2102 or 2104 or whatever you have, I'll just type CP210X. Then you can also type drivers. Okay, and you can come to this Silica Lab, their original website for the drivers. Okay, generally VCP drivers do allow you to download all the versions of different softwares. So you can see this CP210X universal Windows driver, which takes care of all the different uh, particular versions of that particular driver, and you can just download that universal driver file from Silicon Labs. So once you download, what you have to go do is you have to extract the folder because it's downloaded as a zip file. So you open it, hmm, and then you have to install it. Okay, so if your Windows machine is x64, which will be the typical case, you can automatically detect it. सो आपका कनेक्ट करने के बाद एक अननोन डिवाइस आ रहा होगा, उस पर राइट क्लिक करके पहले ये
डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके फोल्डर बना के रखो, ठीक है। ओके, and then you try to install the driver INF file so that your board is automatically detected. Once you do that, disconnect the node MCU and reconnect. You should see the COM port. Okay, so now let me just go back to the third lecture presentation. Okay, आपको Arduino programming पहले से अगर आती है तो we'll just speed up this part. Let me just see how many people know this programming. Can you just reply in the chat window if you know the Arduino programming? Okay, Richa already knows. Okay, and one student is knowing. Others? Okay, then I have to go slower. Okay, Rahul also knows. Okay, okay. So few of the students are from first year maybe. No issues. So I will just keep the pace slower. Let me just reshare the screen. See, we don't want to just speed up the things, and क्योंकि कैसे होता है स्कूल में एडिशन आपको सिर्फ दो ही नंबर की सिखाते हैं, करेक्ट। और फिर आप वो एडिशन सीख के कितने भी नंबर से ऐड कर सकते हो। तो ये आईओटी प्रोग्रामिंग लेक्चर ये इतनी देर बात करके सर ने सिर्फ 5 ही कोड सिखाया, ऐसे हो सकता है, नो इश्यूज। पर वो एक बेस प्रिपेयर करता है जिससे आप 500 कोड लिख सकते हो। सो इट डजेंट मैटर, वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द बेसिक्स। एकदम छोटा लेगो ब्लॉक अगर आपको सीख गए, दो लेगो बैग एक दूसरे को कनेक्ट कैसे करने, you can then make hundreds and thousands of thing out of it. So it's not कि आपको सारे कोड मेरे इस लेक्चर से जानना जरूरी है, आपको बस कोड जानते कैसे ये जानना जरूरी है इस कोड से। So maybe let us start with the simplest code of, I think we will start with the simplest communication code जहाँ पे आपका नोड एमसीयू आपको लेटर भेज के बताता है, ठीक है। So obviously hello world of the entire programming system is blinking the LED, पर उससे भी पहले हम एक चीज फाइंड करना चाहते हैं कि नोड एमसीयू का बॉड रेट सही से सेट है कि नहीं। सो इसीलिए पहला कमांड जो है आपके सेटअप लूप में आपको टाइप करना है सीरियल डॉट बिगिन इन ब्रैकेट 115200 ब्रैकेट क्लोज सेमिकोलन, ठीक है। ये एक ही लाइन आपको टाइप करनी है जिसकी वजह से सीरियल कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाए बिटवीन कंप्यूटर एंड योर नोड एमसीयू, ठीक है। नाउ द फन पार्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर नोड एमसीयू, जो स्टैंडर्ड बोर्ड्स है वो 9600 से शुरुआत करते हैं, पर नोड एमसीयू के सारे बोर्ड्स जो है वो 115200 पे काम करते हैं। तो इफ़ यू रिमेम्बर लास्ट लेक्चर में आपने एक सीरियल मॉनिटर खोला था, अगर कनेक्टेड है बोर्ड तो ही वो खुला होगा। तो उसमें आपको नीचे बॉड रेट 9600 दिख रहा होता है, उसको चेंज करके आपको 115200 करना होता है। आई विल जस्ट शो इट टू यू वंस इन द प्रेजेंटेशन दिस टाइम ऑल्सो। सो नेक्स्ट थिंग इज, once you select, remember this magical number 115200, ठीक है। 1152 मतलब 115200। सो इसको आई डोंट नो याद रखने के लिए आप कुछ उसमें ट्रिक लगा सकते हो, पर 1152 ये नंबर याद रखना है नोड एमसीयू प्रोग्रामिंग करते हो। 9600 स्टैंडर्ड होता है, आर्डिनो का बाय डिफॉल्ट भी वही होता है, सो वी हैव टू चेंज इट। नेक्स्ट इज, नाउ यूआर्ट होता क्या है, बेसिकली आपके यूएसबी कम्युनिकेशन से या ये जो टीएक्सडी आरएक्सडी है वो इंटरनली कनेक्टेड होते हैं टू द माइक्रो कंट्रोलर। सो देयर इज अ इंटरनल वायर गोइंग ऑन between TXD RXD pin coming through the CP2102 to this particular two pins, and same two pins are going to the ESP12E module on your node MCU, ठीक है।
So that is a serial communication, UART. Now how to send the data? So the first thing is serial dot print. ये डेटा कौन किसको भेज रहा है? So it is a passing a character from node MCU to the PC. So serial dot print ये क्या करता है? सीरियल पोर्ट पे कुछ प्रिंट कराता है. क्या प्रिंट कराता है? कैरेक्टर. ठीक है. नाउ म्यूसी में माइक्रो कंट्रोलर में अगर वेट करना है तो यू हैव टू कॉल अ डिले फंक्शन इन ब्रैकेट राइट 4000 क्लोज द ब्रैकेट क्लोज इट. सो 4000 ये नंबर वेरिएबल है, वहां आप जो नंबर डालना चाहो डालो, जितने देर का आपको डिले चाहिए. और ये डिले हमेशा मिली सेकेंड्स में मेंशन होता है. सो व्हेन आई राइट डिले 4000, ये क्या करेगा? 4 सेकंड तक रुका रहेगा. माइक्रो कंट्रोलर को बोलेगा इतने टाइम के लिए चुप बैठो, कुछ मत करो. ठीक है. सो ये डिले 4000 इज वेट फॉर 4 seconds. नाउ लेट अस गो बैक टू द फर्स्ट कोड. ठीक है. आपको ये कोड टाइप करना है मेरे साथ. ठीक है. और एक चीज याद रखो कि ये कोड क्या करेगा? कैरेक्टर ए भेजेगा आपके कंप्यूटर को फ्रॉम नोड एमसीयू. तो आपका नोड एमसीयू प्रोग्राम होके खुद कैरेक्टर ए भेजेगा आपके ही पीसी में. सो वॉइड सेटअप सीरियल डॉट बिगिन 115200. इसमें देखो ये एस जो है वो कैपिटल है. हाँ, सीरियल डॉट बिगिन 115200. देन डिले ऑफ 4 seconds, तो डिले 4000 डाला है मैंने. एंड सीरियल प्रिंट ए. ठीक है. ये 4 seconds क्यों है? क्योंकि आप जब प्रोग्राम अपलोड करोगे तो विद इन 4 seconds यू शुड एबल टू टर्न ऑन द सीरियल मॉनिटर. जनरली इतना टाइम काफी रहता है. बट इफ यू आर वेरी स्लो, you can increase this 4 seconds to 8 seconds also. There is no issue at all. Hmm. So once you do that, type the code. ठीक है. अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप क्यों नहीं टाइप करके दिखाते, तो मैं दिखाई देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट गो टू द फाइल. ठीक है. न्यू. मुझे भी आप ही की तरह सेटअप और लूप दो चीजें दिख रही है. यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? पहली चीज तो प्रोग्रामिंग पहले क्लियर कर लो. तो व्हाट इज द क्लियर प्रोग्रामिंग? फर्स्ट यू हैव टू रिमूव द एग्जिस्टिंग कमेंट्स. ठीक है. सो आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन किया है उसको क्लोज करना पड़ेगा. दिस इज द क्लियर प्रोग्रामिंग. बीच के सारे स्पेसेस हटा दो. फिर वॉइड लूप ओपन हुआ है, उसको क्लोज करना होगा. तो सी प्रोग्रामिंग में हम ओपनिंग क्लोजिंग नीचे के लाइन पे करते हैं, विच इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग अ कोड. सो जनरली ऐसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. ठीक है. सो ये आपका क्लीन प्रोग्राम हो गया, फर्स्ट क्लीन प्रोग्राम. So whenever you start a new loop, you put a tab or a space so that you know कि आप कितने loop अंदर open करते हुए गए हो, so that closing becomes easier. I will also paste the clean version of the basic code. ठीक है. I think I can share it with everyone. Okay. I think the code is available to everyone. Now let us start programming. So what is the first line I want you to type? Serial. Okay. अब यहाँ मैंने क्या मिस्टेक की है कि मैंने कैप्स लॉक ऑन रख के सीरियल टाइप किया, पर उससे क्या पता चला आपको कि मैं एस जो है वो कैपिटल टाइप करने की कोशिश कर रहा था. सो आई विल जस्ट चेंज इट सीरियल. ठीक है. और वो जैसे ही सही है अपना कलर चेंज कर लेता है. डॉट बिगिन. ठीक है. ब्रैकेट में आपको ओपन क्लोज इस तरह से देना है और स्पीड मेंशन करनी है. सो लेट अस गो बैक टू आवर प्रेजेंटेशन. पहला लाइन क्या कह रहा है? सीरियल बिगिन 115200 एंड देन सेमीकोलन. सो लेट अस डू दैट. सीरियल बिगिन, एंड में सेमीकोलन डालना भूलना मत, सी प्रोग्रामिंग है. 115200. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट लाइन दैट यू हैव टू टाइप, एंड व्हेन यू ट्राई टू कंपाइल इट विल आस्क मी टू सेव. सो आई कैन जस्ट सेव इट ऑन माय डेस्कटॉप. Code Arduino Sketch 19 November A. Please don't try to rename it, and even if you are renaming it, try to type this code on, what is the date today? 19th NOV. ठीक है. सो जनरली प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता कि ये नेमिंग बहुत ही सिलेक्टिव होना चाहिए. हाँ ठीक है.
आप अब अगर आपका खुद का नाम डालना चाहते हो और आपका खुद का नाम कोई स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, तो देर इज नो प्रॉब्लम. आई हैव रिटन निनाद 19 NOE. So let Arduino decide the name, or if you want to write your own name, go ahead. If it is not a function, अगर आपका नाम साइन या कोसाइन नहीं है, तो go ahead and write your name. ठीक है. जनरली इंडियन नाम स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं होते, तो बहुत रेयरली ऐसा होगा कि आपका नाम नहीं चलेगा एज अ कोड नेम. विंडोज चलेगा, लेकिन कोई भी स्पेस नहीं देनी होती, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज करना होता है, नंबर से नहीं चालू करना होता है, 11 कैरेक्टर के ऊपर नहीं जाना होता है. तो ये सारे छोटे छोटे रूल है फाइल नेम में. अगर यहाँ पे मिस्टेक करते हो तो सब सही होने के बावजूद आपका प्रोग्राम नहीं चलता. तो इसीलिए आई वुड ऑलवेज प्रेफर टू यूज समथिंग लाइक योर ओन नेम एंड डेट टू सेव द प्रोग्राम फाइल. एंड एज अ प्रोग्रामर जनरली हम दिन में एक से ज़्यादा प्रोग्राम नहीं लिखते, और लिखते भी हो तो आप उसको आगे _1 _2 करके कर सकते हो. सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द कोड. फाइल नेम का याद रखना. ठीक है. सीरियल बिगिन 19200 मैंने ट्राई किया, एंड नाउ आई क्लिक ऑन दिस टिक to check whether my code is correct or not. So it will compile the sketch for my ESP32 and tell me whether the code is correct or not. ठीक है. सो यहाँ पे देख सकते हो आप, कंपाइलिंग स्केच लिख के आया है, और उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा. सो you have to be patient when you are uploading your ESP32 codes. Arduino जितना फास्ट नहीं होता, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है नोड एमसीयू की प्रोग्रामिंग करते वक्त. Okay, so done compiling, and there is no error. So it is showing me कि sketch is using 25% of the program storage space and 34% of the dynamic memory, and it will also tell me कि कितना procedure space बचा हुआ है. So कुछ लोगों को यहाँ पे error भी आ सकते हैं अगर एक भी mistake उन्होंने की है. Let me just do a mistake and show you. Okay, now if I try to compile, it should not able to compile. It should give me an error. See, this is the error you will get, and you will not see the output. Instead of that, you will see exit status 1, that is exited with error. और जो भी लाइन में एरर है वो अपने आप रेड होके आपको दिखाई दे देगी. So that is a easier way of identifying whether there is a error in the coding or not. ठीक है, हमने यहाँ तक तो सीख लिया. Now let us go back to the presentation. Okay, so now we have to wait for 4 seconds. हाँ, आप इसको चेंज करके 5 सेकेंड कर सकते हो. So let us go back and type something called as delay. लेकिन इसमें कोई भी वर्ड कैपिटल नहीं है. Since this programming language is case sensitive, this delay is not same as this delay. ठीक है. और देखो, जब मैं कैपिटल डी से देता हूँ तो वो चीज़ ऑरेंज में नहीं आती, मतलब वो कोडिंग सही नहीं है. ठीक है. जनरली यूजर डिफाइंड चीज़ें आर्डिनो में ब्लैक में दिखाई देती है. सो ये डिले उसको लगता है ये यूजर डिफाइंड लूप है. बट इंस्टेड ऑफ दैट, इफ आई टाइप टी स्मॉल, इट ऑटोमेटिकली टर्न्स इट इनटू अ पिंक विंडो. ठीक है. एंड डिले ऑफ 4000. यहाँ मैंने क्या चेंज करने बोला, 5 सेकेंड का डिले चाहिए तो 5000. अब लोग बोलेंगे कि 5 सेकेंड के लिए 5 क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि ये मिली सेकेंड्स में, तो 1000 milliseconds इज 1 सेकेंड, एंड दैट्स व्हाई आई रोट 5000. ठीक है. एंड देन लास्ट कमांड इज serial dot print a. सो वी हैव टू टाइप. नाउ यहाँ पे ट्राई करो serial एस कैपिटल डॉट प्रिंट a. अब यहाँ पे a वेरिएबल डिफाइंड ही नहीं है, तो देर इज सम error you are going to get. But if you put it in a quotes, वो कैरेक्टर की तरह ले लेगा. ठीक है. So now you can see सिंगल कोट्स के अंदर a लिखना है. You can put your own name in instead of a. You can write NINAD. ठीक है. So अब ये क्या करेगा, निनाद प्रिंट कर देगा. So
You can again check कि ये सही है कि नहीं by clicking the compile statement, and if you have some error it will throw an error. If you don't have an error, it will show this is okay. You can go ahead with this particular program. Okay, only Tushar can do it. Others since don't have a board. So yes, Tushar, please do it. Hmm. Then in the syntax, I have already told you it's a case sensitive syntax. So S should be serial.print in capital. Then once you have actual board connected, instead of this tick जो हमने की थी ये वाली, we have to click on this upload button. ठीक है? So instead of this tick, you click the upload button. और आपको बहुत टाइम फिर वेट करना पड़ेगा. अपलोडिंग स्टेटस ऐसे लाइन बाय लाइन आता है. 15% हो गया, 23% हो गया. एंड वंस इट फिनिश, यू शुड ओपन अ सीरियल मॉनिटर. और यहाँ पे आपको क्या दिखना चाहिए? एक कैरेक्टर प्रिंट हुआ हुआ ए. ठीक है, तो आई थिंक only Tushar can do this. And if he has installed cp2102 drivers properly and conditionally if his board is actually in working state. Okay, so I think this program is clear to you. Everybody must have wrote this program. Let us go ahead. So setup loop is the part that only runs once, and to start the serial monitor we have this particular icon in the corner, but for that your board has to be connected. Okay. So next thing is configuration. So serial अपने को ए एक ही बार प्रिंट नहीं करना है, हर लाइन बाय लाइन प्रिंट करना है. तो व्हाट यू कैन डू इज, जो नीचे का पार्ट है कॉन्फ़िगरेशन, तो सीरियल बिगिन लाइन थी तो उसको ऊपर ही रखो सेटअप में, लेकिन डिले 4000 एंड देन सीरियल प्रिंट ए जो है उसको नीचे शिफ्ट कर दो. तो अभी हम क्या करेंगे, हम इस कोड में से ये दो लाइन जो है डिले 5000 और प्रिंट निनाद, उसको हम लूप में शिफ्ट कर देंगे. व्हेन यू पेस्ट यू कैन सी अपने आप एक टैब ऐड हो जाता है. सो यू कैन जस्ट डिलीट द टैब, और यहाँ पे एक अपने आप स्पेस क्रिएट हो जाता है. सो यू कैन ऑल्सो डिलीट दिस स्पेस. So clean coding doesn't have any extra spaces. ठीक है, so that's how the clean code should look like. I can just do this control C and paste it in your chat box. So that is the code you have to print a after every 5 seconds. So instead of a, I put my own name, Ninad. Okay, so yeah, so now if you do this change, what will happen is it will start printing a in your character box com port 4, and after every 4000 milliseconds. So every 4 seconds, or in our case every 5 seconds, it will print निनाद, उसके बाद वापस निनाद, उसके बाद वापस निनाद. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बीच में कोई नई लाइन नहीं आएगी. तो नया प्रिंट हुआ ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नई लाइन नहीं आ रही है. तो आपको एक चेंज करना होगा कोड में कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रिंट यू हैव टू राइट प्रिंट एल. ये आपने अगर सी प्रोग्रामिंग सीखा है तो आपको पता है कि प्रिंट एल न्यू लाइन पे भेज देता है. सो एल एन स्टैंड फॉर न्यू लाइन, एंड दैट विल चेंज द आउटपुट फ्रॉम रेगुलर ए टू ए स्पेस ए स्पेस ए स्पेस ए. क्लियर? सो लेट मी जस्ट डू दैट चेंज इन द कोडिंग. एक ही चेंज करना है, इंस्टेड ऑफ प्रिंट आई हैव टू राइट प्रिंट ln, and then I have to upload the code from this particular button over here. But since I have not connected on MCU, you all can just also try this. Click on this particular tick bar. Okay, so till this point I think everything is clear. uh, Now we are running out of time, so I will just go to the blinking of LED program on non MCU, and that will be the starting point of all the programming. So generally a LED is having one एनोड एंड वन कैथोड, और इसको आप जब पॉजिटिव वोल्टेज देते हो तो वो टर्न ऑन कर देता है.
टिपिकल एलईडी 20 एम्पियर करंट लेता है और उसको 1.2 वोल्ट की बैटरी लगाने के बाद या 1.2 एंड अबव वोल्टेज के बाद ही वो चलता है, लेकिन 5 वोल्ट डायरेक्टली दे दोगे तो वो जलता है। तो आपको समवेयर 1.2 टू 1.8 वोल्ट के अराउंड वोल्टेज उसको देना रहता है। आर्डिनो आपका आउटपुट पे भेजता है 5 वोल्ट। तो हमेशा एक रेजिस्टर सीरीज में लगाते हैं हम, एटलीस्ट 300 ओम्स, 100 ओम भी चलेगा लेकिन एटलीस्ट 300 ओम्स टू 1 किलो ओम, इस रेंज का हम रेजिस्टर सीरीज में लगाते हैं एलईडी के, सो दैट इट डजंट बर्न आउट। एलईडी कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। यहाँ पे एक पहला तरीका दिखाया गया है जहाँ पे कैथोड जो है आपके एलईडी का वो ग्राउंड को जा रहा है, और एनोड जो है इज गोइंग वाया रेजिस्टर टू द आर्डिनो का पिन, नोड एमसीयू का पिन D0। और इस रेजिस्टर की टिपिकल वैल्यू 220 ओम यहाँ पे ली है, जिससे एलईडी बहुत ब्राइट ग्लो होगा। यहाँ पे येलो एलईडी जला हुआ है। और दो कनेक्ट करने के मेथड में से इस पर्टिकुलर वे को सोर्सिंग बोलते हैं, जहां से आपका नोड एमसीयू करंट भेजता है एलईडी को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुषार तुम्हारे पास एलईडी और एक रेजिस्टर है तो ये सर्किट बना के देखना। अगर नहीं है तो सिर्फ नोड एमसीयू पे हमारे पास एक एलईडी और रेजिस्टर ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो वी विल सी द आउटपुट ऑन दैट एलईडी। देन सोर्सिंग में जब आप लॉजिक 1 भेजते हो तो यहाँ पे 5 वोल्ट होता है, यहाँ पे ग्राउंड होता है। तो ये करंट जो है ये रेजिस्टर के थ्रू कंट्रोल होके एलईडी के अराउंड 1.2 वोल्ट आते हैं, जिसकी वजह से एलईडी ऑन हो जाता है। सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ कनेक्टिंग द आउटपुट। नाउ डिजिटल लाइब्रेरी में मतलब कोई भी पिन ऑन या ऑफ करने के लिए अपने पास तीन मेजर कमांड होते हैं। पिन मोड, जो कि आपके डिजिटल लाइब्रेरी को ऑन या ऑफ कर सकता है। दूसरा होता है डिजिटल राइट, जो पिन और उसका स्टेट बताता है, लो लिखना है या हाई। और तीसरा होता है डिजिटल रीड, जहाँ पे आपको बस पिन नंबर देना होता है। तो पहली लाइन अभी हम प्रोग्राम में क्या लिखेंगे, पिन मोड, जो भी एलईडी की पिन होगी, नोड एमसीयू इज इन सिंकिंग कॉन्फ़िगरेशन। अब ये सिंकिंग कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, यहाँ पे 3.3 वोल्ट एक रेजिस्टर के थ्रू एलईडी के एनोड को बाय डिफॉल्ट दिए रहते हैं, और एलईडी कनेक्ट होता है नोड एमसीयू के D0 पिन के साथ। सो अगर उस पिन पे मैंने लॉजिक 1 भेजा है तो एलईडी दोनों तरफ से 3.3 वोल्ट लेगा, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एलईडी इज 0 वोल्ट, एंड दैट्स व्हाई एलईडी इज इन ऑफ स्टेट। as soon as I give a logic low on the node MCU, मतलब सारा करंट जो है वो सिंक हो जाएगा नोड MCU के अंदर, और जिसकी वजह से एलईडी ग्लो करेगा। सो 3.3 वोल्ट से करंट आएगा जो कि माइक्रो कंट्रोलर में जाएगा। सो वेन एवर यू हैव अ हायर लोड्स ऑलवेज यूज द सिंकिंग नोड। और इसी चीज के लिए उन्होंने जो बाय डिफॉल्ट आर्डिनो पे नोड एमसीयू पे एलईडी दिया है वो भी सिंकिंग कॉन्फ़िगरेशन में। तो अब इस एलईडी को ग्लो कराना है तो आपको डिजिटल D0 पिन पे लॉजिक लो भेजना है। ठीक है, ऑन बोर्ड एलईडी पिन इज कनेक्टेड टू D0। यहाँ पे वो ब्लू कलर का आपको एलईडी दिखाई देगा। एलईडी ऑन नोड एमसीयू इज एसएमडी टाइप, मतलब यहाँ पे कोई जो पहले का वर्जन दिखाया था वो थ्रू होल टाइप एलईडी था। यहाँ पे इतना छोटू कंपोनेंट होगा कि उसमें से एलईडी कौन सा है पता भी नहीं चलेगा जब तक वो ग्लो ना करे। ठीक है, now let us try to write this code। so LED पिन D0 को ऑन करना है, तो लो लिखने के बाद वो टर्न ऑन कर देगा। so let us write this code। so सीरियल बिगिन वाला कोड रखना चाहते हो तो रखो। नेक्स्ट इज पिन मोड, ये भी कॉन्फ़िगरेशन का एक तरीका है और उसमें M कैपिटल है। सो दैट इज हाउ यू शुड राइट इट। पिन मोड, यहाँ पे देखोगे कि आपको उसका पर्टिकुलर पिन कॉन्फ़िगरेशन जानना है। सो वो है मेरा D0 आउटपुट में, क्योंकि एलईडी एक आउटपुट आयो है, इनपुट और आउटपुट दो ही वर्ड्स होते हैं इसमें। सो पिन मोड D0 एज आउटपुट। सो पिन मोड आई वुड से D0 और फिर आई हैव टू टाइप आउटपुट। ओके, यहाँ पे इस चीज को करने की वजह से क्या हो गया, D0 जो है अभी वो आउटपुट मतलब एलईडी को चलाने के लिए केपेबल हो गया, वहां से करंट निकलेगा या करंट सिंक कर पाएगा वो। ठीक है, इनपुट डिफाइन करते तो वहां पे एलईडी लगाते तो कभी वो चलता नहीं।
So it is always important that you have to understand what kind of IO you have. Next thing is I want to turn on this LED. So what I have to do is I have to write something called as pin mode. Okay. Digital write D0 to low. Let us try that. So I will just remove this code of printing Ninad. I can say digital write. Okay. And then I would have to say D0. Okay. And then yeah, I have to say low. So इससे क्या हो जाएगा, एलईडी बंद हो जाएगा. सो यहाँ पे एलईडी डिजिटल राइट का डब्ल्यू कैपिटल है, पिन मोड का एम कैपिटल है. हम इसको कैमल केस कहते हैं. कैमल केस में जहाँ जहाँ आप दो वर्ड के बीच की स्पेस हटाते हो, जैसे डिजिटल और राइट ये दो अलग वर्ड है, तो जहाँ पे आप स्पेस हटाते हो वो वर्ड कैपिटल में लिखते हैं. ठीक है. सो यहाँ से आपने एलईडी बंद कर दिया, लेकिन आपको तो एलईडी ब्लिंक कराना है, तो क्या करोगे आप, सीधा उसको हाई कर दोगे. सो उससे क्या हो जाएगा, एलईडी बंद चालू होता रहेगा. लेकिन आपकी आंखें बहुत स्लो है, आपकी आंखें परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से फास्ट होने वाली चीज़ों को देख नहीं पाएंगी. तो उसके लिए आपको एलईडी ब्लिंकिंग जो है वो स्लो करानी पड़ेगी. एंड दैट वी कैन डू यूजिंग अ कमांड कॉल्ड डिले. सो डिले क्या करता है, डिले अपने आप एक टाइम ड्यूरेशन के लिए कुछ नहीं करता. सो मैंने 1 सेकंड का डिले डाल दिया और वापस बंद होने के बाद 1 सेकंड का डिले डाल दिया. तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पे तो एलईडी एक बार ऑन हो रहा है और एक बार ऑफ हो रहा है, कंटिन्यूअस ब्लिंकिंग कैसे है. सिंस दिस कोड इज रिटन इन द लूप, तो क्या होगा, एलईडी ऑन हो जाएगी, 1 सेकंड के लिए ऑन रहेगी, फिर एलईडी ऑफ हो जाएगी, 1 सेकंड के लिए ऑफ रहेगी, लूप में है. तो नेक्स्ट एलईडी ऑन हो जाएगी, 1 सेकंड के लिए ऑन रहेगी. तो ये जो लास्ट का डिले है ये आप नीचे भी रख सकते हो या ऊपर भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लूप में चलेगा. ठीक है. तो पहले ऑफ करना है पहले ऑन करना है उसके ऊपर इस डिले की पोजीशन रहेगी. लेकिन इतना फास्ट ये चीज होता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब पहले ऑन हुआ था या पहले ऑफ हुआ था. सो दिस इज हाउ द blinking code is written, and I will just paste this code also onto your chat box. Okay, so I will just rush through the slides. Okay, so you can turn on the LED, and then you can turn off. Also you have to give the semicolons. So ये 5 लाइन का कोड आपका ब्लिंकिंग कंप्लीट कर देगा. एंड आउटपुट पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक एलईडी लगा हुआ है जो कंटिन्यूअसली ऑन होगा 1 सेकंड के लिए, फिर 1 सेकंड के लिए ऑफ होगा, फिर वापस ऑन हो जाएगा और वापस ऑफ हो जाएगा. सो आई थिंक with that we will stop, but before I leave, I would like you to see this particular coding method. तो ट्यून IoT करके एक वेबसाइट है, आई विल जस्ट गिव इट्स लिंक टू यू. यहाँ पे आपको कोड लिखने नहीं पड़ते, आपको ब्लॉक कोडिंग करनी पड़ती है, मतलब लॉजिक सिर्फ सोचना है. एंड यू जस्ट हैव टू, you will get your Arduino code directly out of it. I will just show you a demo in a minute. Sorry, I am late by a minute, but I will try to finish it. Not more than 2-3 minutes more. So what I have to do is I want to write the same code but through the block code. So I will take integrated digital pin. So I will put it in loop. Digital write pin D0 status to high. Okay. And then I also need to put the same pin to low. So since I know the pin is at digital right, but integrated LED is also available. So then you can go to there are many blocks available. Okay. So there are various blocks, out of which I will select delay in milliseconds, wait for 1 second. Then again I will go to the integrated LED. I will put it at low. Okay. And then again I will put a 1 second delay. So this is how you can design the coding. Okay. And once you design the code,
यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन कोड. ठीक है, यहाँ पे देखो हमने जो कोड लिखा वो अपने आप जनरेट होके आ गया. So maybe I will have a separate lecture on this. You can watch it on YouTube, how to use Tune IoT. Maybe this Tuesday this lecture will be there, so you can go to the website and then, but you can also explore on your own. And this is a fun way of doing the code instead of syntax, because you can see all the syntax are perfectly generated out of it. And this is a specialized website only for ESP8266. So you just have to think about the logic. There are many more blocks available, and obviously more you explore, so especially the IoT section, because it's very difficult to write the IoT codes. Generally this thing helps कि आपको अगर IoT स्टेशन सेटअप करना है तो आप सीधा यहाँ से वो ब्लॉक डाल दो, यहाँ पे आपका SSID डाल दो, लेट्स से निनाद. ठीक है, और उसका पासवर्ड है लेट्स से 12345678. दैट्स इट. तो ये एक ब्लॉक डालने की वजह से क्या हो गया, आपके कोड में सीधा उसके लिए जो रिक्वायर्ड कोड है और उसके लिए जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरी है वो अपने आप आ जाती है. सो वंस यू गेट दिस कोड, व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट कॉपी दिस कोड, take it to your Arduino software, paste it, and you're done with it. So you can see the entire coding becomes so easy. But at the end of the day you are an engineer, so I don't want you to use the block codes. इसलिए मैंने आपको आज एकदम बेसिक कोडिंग सिखाई है. ब्लॉक कोड इस बच्चों के लिए है. आजकल जो इंटरनेट पे ऐड आते हैं ना कि आपकी 6 स्टैंडर्ड की कोडिंग बच्ची ने ऐप बना लिया वगैरह, वो सब ब्लॉक कोडिंग के थ्रू होता है. और असली इंजीनियर्स प्रोग्रामिंग करते हैं, ब्लॉक कोडिंग की हेल्प लेते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डू द प्रोग्रामिंग. सो दिस इज द कोड टू स्टार्ट विथ. पहली चीज तो ESP8266 Wi-Fi.h ये लाइब्रेरी मस्ट है to use any kind of Wi-Fi capability of the board. And then this is the command to make it a soft access point with this SSID and this password. Okay, so with that I will stop for the day, and maybe you can watch my other videos, or maybe some other session if ma'am schedules, then I will teach you the rest of the part. So thank you.